Hello, hello, boys. How are you all doing today? My God, who am I seeing today on in front of me after such a long time? How Long. are you, Vignesh? Welcome to the Sports Republic, brother. How is it going? Been good, been good, been very happy few Right to days. Abhi? Uh, so yeah, sorry for that technical glitch, boys. Welcome to the Sports Republic, everybody. I am Shashank. मेरे साथ विग्नेश इज हियर ऑल्सो विकास इज ऑल्सो हियर जो मेरे साथ है स्पोर्ट्स रिपब्लिक है यहाँ पे शशांक एंड विकास और साथ में विग्नेश भाई आज है हमारे साथ विग्नेश हाउ इज लाइफ बिन एंड welcome to the Sports Republic for yet another podcast, yet another live podcast. Today is a very special one. हम लोग एक तो बहुत समय बाद मिल रहे हैं firstly, and you know पिछले IPL में
विकास और मेरे को तो याद है कि हम लोग हर रोज मैच के बाद हर बात दिन। करते थे, हर दिन मैच के बाद बात करते थे. सो दिस हैजंट हैपेंड दिस सीजन, बट nice to have you, Vignesh, especially since there's just so much to talk about. Welcome, bro. Welcome to the Thank watch along. thank you. Which watch along बोल रहा हूँ. Welcome to the podcast. Welcome to the podcast. Thank you. Yeah, बस how's life been? And thank you के अलावा मतलब कि क्या कैसा है? How's it been? How's the IPL been for you this season? और हमने you know हम मतलब दिल yeah, take your time. ये लाइव पॉडकास्ट है, आराम से कर रहे हैं हम लोग. There's no time restriction. Take your time. राइट राइट सबसे पहले तो यार शानदार शनिवार था कल तो आपका शानदार दिल शनिवार में. आपका दिल तोड़ के हम अंदर पहुंचे हैं बट I'm pretty sure you also know कि मतलब the top four deserving teams have made it to the playoff. Sure, And sure. then Yeah. RCB की social media handle जो है it has been so heartwarming to see and for all the right reasons. And it's been good यार, it's been good. शायद हम लोग ने जो predictions किए थे उसमें शायद गुजरात Titans was one of the teams which has pleasantly surprised us. करेंगे But करेंगे. हाँ, हाँ हाँ, कंटिन्यू बोलो बोलो. I did so, not want to stop you there क्या हुआ? because this what we are doing right now, the live podcast is about the six teams that who did not make it after the playoffs. जो चार टीमें गई है उनकी journey will be more well understood after the playoff matches are done. So we will do another podcast on those teams, but this is for that. But yeah, continue after GT. Sorry, GT में तो कोई जाने नहीं देना चाह रहा था, you know. राइट राइट तो मोर प्रेडिक्टेड था सनराइजर्स वगैरह इन सब की जो हमने मतलब प्रेडिक्शन करी थी बॉटम ऑफ द टेबल मोर और लेस दे एंडेड एट द सेम प्लेस Yeah, एंड क्रिकेट कंटिन्यूज टू सरप्राइज अस यार yeah, बीन अ man. लॉन्ग टूर्नामेंट एंड जैसे राइटली Yeah, सेड हम उतना मिल नहीं पाए थे इस बार but yeah. I am pretty sure कि our thoughts were conquering most of the games, most of the decisions that made sense, that did not make sense. Looking forward to do this with the both of you. Let's get the party Mm. started. Yes. Because anything before we start? ना मैन मतलब हम दोनों तो साथ में मैचेस देखे बट इट्स गोना बी अ गुड सेशन आई थिंक विद विघ्नेश के अलग पॉइंट ऑफ व्यू अलग मेटाफर्स अलग सब कुछ आने वाला है सो या डेफिनेटली Yeah. एन क्योंकि एक्साइटिंग मैं एंड और विकास तो या मैं और या विकास तो बैठते ही है रोज, साथ में मैच हाँ देखते हैं. वी डू द वॉच लॉन्ग एवरी डे. बट विघ्नेश का पर्सपेक्टिव रहता है और विघ्नेश बोलता है ना कि हमारे ज्यादातर थॉट्स कंकरिंग हो रहे होंगे. विघ्नेश हाँ होते हैं, काफी होते हैं, बट वी हैव 20-30% Fair share of where we disagreements. differ also. As you said कि जो सोशल मीडिया देख के बड़ा वार्मिंग लगा तेरे को, मेरे लिए वो ऑपोजिट था. सो दैट्स वेयर द नॉन कंकरेंस हैपेंस फॉर मी. Right, बट एनीवेज, गुड टू हैव यू बैक ब्रो. तो बिफोर हमने सोचा था कि हम लोग बात करेंगे ये छह टीमों की, दोज हु डिड नॉट मेक इट टू द प्लेऑफ्स, व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर देम. बट बिफोर दैट आज एक और न्यूज आ गई है. Indian team has been announced firstly for the tour, for South Africa's tour to India, जो टेस्ट मैचेस होंगे, जो T20 इंटरनेशनल्स होंगे, and then for that loan test to England, that team has also been announced. Can we have that up on the screen, Rishikesh? So if you can see the team over there, the Indian team has been announced, which is it's a little difficult for me to read. Just a second. Yeah, KL आई Rahul. जस्ट रीड Yeah, KL Rahul, Ruturaj Gaikwad, Ishan Kishan, Deepak Huda, Shreyas Iyer, Rishabh Pant, Dinesh Karthik, Hardik Pandya, Venkatesh Iyer, Yuzvendra Chahal, Kuldeep Yadav, Aksar Patel, Ravi Bishnoi, Bhuvneshwar Kumar, Harshal Patel, Avesh Khan, Arshdeep Singh, and Umran Malik, the two new faces, as if you say, would make their India debut, say so to say, in this series. तो भाई ये तो मतलब चौंका देने वाली टीम थोड़ी सी लग रही है मेरे को. आई डोंट नो, बिकॉज हम लोग इस सीरीज को जरूर उस तरह से देख रहे थे कि चलो सीनियर्स को जरूर रेस्ट मिला है. yeah, बट वन आई इज ऑन द T20 वर्ल्ड कप, राइट? कि या आईपीएल के इट शुड बी परफॉर्मेंसेस के बेस पे इट्स अ कंपटीशन दैट इज एन हेल्ड, और आईपीएल इज अ वर्ल्ड क्लास कंपटीशन. इंटरनेशनल प्लेयर्स खेलते हैं, यू हैव टफ सिचुएशंस जहाँ पे यू हैव टू फेस दैट टफ सिचुएशन, एंड सो टू से विन योर टीम मैच वैच जिताना होता है. तो बट मतलब इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव लीग, तो उसके परफॉर्मेंसेस बहुत मायने रखते हैं, और ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग टीम है मेरे हिसाब से. सो आई गो टू विघ्नेश फर्स्ट. विघ्नेश, some inclusions that you think were a surprise and some you think that weren't in this team?
So looking at the last series that we played before the IPL against Sri Lanka, शायद उस टीम Yeah. में से दो नए inclusions हैं अर्शदीप and उमरान मलिक, the last Yeah. two names in the Yeah. list. बाकी सब शायद Yeah. उस टीम के हिस्सा थे which played Yeah. against Sri Lanka. I would have मुझे मतलब ईशान किशन, वेंकटेश अय्यर, sort of people who did not fire in the IPL big time. But for them, it's a big vote of confidence. Ki despite having a mediocre IPL, we are still trusting in you since you are part of the team, kind of a thing. But matlab, for changing times, I guess players like Prithvi Shaw needed to be in this team. Yeah, it's high time that a player like a Prithvi Shaw got a run. And him being not there is a big surprise for me. Rahul Tripathi is another big contender. 2017 से हम देख रहे हैं राहुल त्रिपाठी has selflessly played a lot of impactful knock for his franchisee. Yeah. But I don't think his PR game is right up there to make it to the Indian team for now. But hopefully his name will be there in contention for the T20 World Cup. भाई विकास मतलब ये पीआर गेम इज नॉट, ये क्या कंटेंट, ये नया कुछ आया है क्या सिलेक्शन कैटेगरी? पीआर गेम नॉट अप टू इट, मतलब कि पीआर एजेंसी डिसाइड करती है कि आजकल इंडियन टीम में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, क्योंकि as you were saying कि यार 2021 जो वर्ल्ड कप हुआ था, where we fell short was because of not taking the people who are in form and continuing with the same format. मतलब I understand यहाँ पे, but वेंकटेश अय्यर, like I mean हमको काफी लोग मिल गए हैं अब, मतलब at least तो Yeah. so yeah, what's your thought on this team? यार आई एम वेरी एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ इस टीम से, क्योंकि यहाँ पर कुछ क्लियर आइडिया नहीं मिल रहा है। हम बोलते हैं कि आईपीएल से तुम प्लेयर लो, हम बोलते हैं कि आईपीएल को तुम साइड में रखो। काफी चीज दो 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 एस्पेक्ट हो सकते हैं ना टीम सिलेक्शन के, या फिर तुम आईपीएल Yeah. की टीम लो या फिर तुम आईपीएल के प्लेयर्स छोड़ो। तुमने आईपीएल से दीपक हुड्डा को भी लिया है, आईपीएल के परफॉर्मेंस पे तुमने डीके को टीम में लिया है, बट अगेन यू आर कीपिंग ईशान किशन इन द टीम, यू आर मिसिंग आउट ऑन शुभमन गिल, यू आर कीपिंग वेंकटेश अय्यर इन द टीम। आई डोंट नो, आई मीन वेंकटेश अय्यर की जरूरत भी थी या नहीं इस टीम में, आई रियली डोंट नो। Yeah. यू आर नॉट हैविंग संजू सैमसन। संजू सैमसन को That's कैसे तुम, madness. दैट्स मैडनेस। और स्पेशली आफ्टर, Madness. और वो तो तुम्हारे पिछले टीम में भी था, श्रीलंका वाले टीम में संजू सैमसन था, वो Yeah. अपने टीम को नंबर 2 पर लेके आया है। He has been very impactful, छोटे-छोटे innings but very impactful innings from Sanju Samson, and yet he's not in Yes. the team. I don't know what, again your Kuldeep Yadav is just because of IPL, otherwise उसके पहले वो contention में नहीं था। IPL की वजह से कुलदीप यादव So वापस वही आया। है कि क्या आईपीएल को, आईपीएल क्राइटेरिया है या नहीं है क्राइटेरिया, दैट इज द Exactly, क्वेश्चन। मैं यही बोल रहा हूँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि कंफ्यूजन कितना है इस चीज में कि तुम सच में वर्ल्ड कप देख रहे हो या नहीं देख रहे हो। शुभमन गिल, I think शुभमन गिल has कैसे performed way यार? better than ईशान किशन। Of My course, God, even what better is than that? Gaikwad for that matter. Yeah. Ishan Kishan, it हाँ, is usual exactly, every year, dead rubber, good match performance yesterday. That is the only thing Ishan Kishan has been doing in the past 2 years in the yeah, IPL. So, matlab, this makes no but sense to me. just Shubman Gill, just very Tripathi, happy, yeah, जस्ट वेरी Arshdeep के हैप्पी लिए, फॉर अर्शदीप, बिकॉज क्योंकि भाई उसने बहुत क्या, सारे विकेट्स नहीं लिए, लेकिन उसने मतलब बॉलिंग अच्छी डाली है, उसके लिए रिवॉर्ड तो बिल्कुल मिला है एटलीस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। बट ओवर हियर ऑल्सो अक्षर पटेल क्या कर रहा है यहाँ पे? मतलब सर अक्षर पटेल ने ऐसा क्या किया है? मतलब हाँ, बैटिंग दी है थोड़ी सी, बट कृणाल की बॉलिंग क्या है? लेफ्ट आर्म अगर स्पिनर देख रहे हो आप किसी को, तो कृणाल हैज बीन एक्सेप्शनल इन दिस आईपीएल। मतलब अगर केवल एग्जैक्टली, आईपीएल के बेसिस पे सिलेक्शन हो रहा है, No विघ्नेश Sundar, ऑल्सो, हाँ. या सॉरी सॉरी, नहीं बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो आप? No Sundar, no Ashwin, and Ashwin has been arguably a better all-rounder than Venkatesh Iyer or an Akshar Patel this season, and he was part of the T20 side as well. तो जैसे विकास ने बोला, there is no sort of clarity कि हम लोग यहाँ से pick and choose कर रहे हैं. This is what the roadmap is. This is what you need to या do to get into the team. तो कुछ या clarity है नहीं, and that is how मतलब we know कि how it goes when it comes to the या national. मतलब मैं तो आई वाज एक्सपेक्टिंग फॉर रेवोल्यूशनरी काइंड ऑफ टीम, और वेंकटेश अय्यर मिल रहा है भाई इस टीम में। आई होप थैंक गॉड वरुण चक्रवर्ती नहीं दिखा मेरे को यहाँ पे, नहीं तो मैं लटक, ये पंखा है यहाँ पे, लटक जाता मैं इससे। भाई ये क्या है ये टीम? मोहसिन खान एक और है, आई वुड बी I थिंकिंग would कि have, आई एम अनलकी टू मिस आउट ओवर हियर, because I would. he's arguably LSG's best bowler, मतलब in this राइट राइट, IPL, मतलब you can say that better than Avesh actually भी बोल सकते या हो आप, but it's really weird man, but thankfully they haven't left out Umran Malik. भाई ये उमरान मलिक का तो पीआर भी नहीं था विगी, उमरान मलिक तो सेल्फ जनरेटेड पीआर है मतलब हाँ,
नहीं self नहीं with generated PR. with PR what I try to say is कि मतलब you see influencers जो बोलते हैं कि यार Samson is better than Pant is better than Samson kind of a thing. तो इन लोग Yeah. players जो हैं they at least remain in the news. मैंने कभी भी ऐसे त्रिपाठी को देखा नहीं है कि where he is mentioned कि यार goes right from ball one वगैरह वगैरह नहीं जो भी भाई, है वो man of the match मिलता है उसके बाद the conversation around Tripathi stops. yeah. But if you look at IPL in the last 5 seasons, I don't think there has been a season जहाँ पे उसने 350 से कम रन बनाए होंगे. He Yeah, should have yeah, been yeah. awarded. He is the 100%, unluckiest. 100%. So, absolutely, we are definitely disappointed with the team that has been selected. But moving on, जल्दी से into 3 minutes, दोनों अपने अपने भाई टेस्ट स्क्वाड पे एक बार मैं टेस्ट स्क्वाड जल्दी से रीड आउट कर देता हूँ. इट्स रोहित शर्मा, केएल राहुल, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, हनुमान विहारी, चेतेश्वर पुजारा, ऋषभ पंत, केएस भरत, रविंद्र जडेजा, आर अश्विन, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, सिराज, उमेश यादव, and Prasidh Krishna. So Prasidh Krishna is an addition over there, and Ajinkya Rahane misses out because of injury as well. So yeah, screen pe also, guys, you can see the squad. देखिए जो I've already read out the squad by, so you can take that off the screen right now. So by Vignesh, quick thoughts on this. Not too many changes. It's just continuation of the series only, right? Yeah. And Pujara walks in back on the back of his strong performance in county cricket and शायद वापस नंबर 3 पे खेलेगा जरूर. तो 700 that is रन the मारा क्या है भाई? that is the only thing that might change. So it will be interesting to see if they stick with Iyer or Vihari at number 5, जो musical Okay. chair अब चलने वाली है. उसके अलावा rest of the team picks itself. इसमें कोई ये नहीं है. And Sure. अग्रवाल नहीं है तो रोहित KL will definitely open. So वहाँ पे भी But कोई any chance Prasidh Krishna gets a game? Gets the game. A game क्या है? Gets the game. पता नहीं इन लोग एक स्पिनर खिलाएंगे 2 स्पिनर खिलाएंगे मे बी जडेजा एट 7 तो इफ देयर आर 4 bowlers then maybe 4 seamers then maybe Krishna might get a chance else if they go in with just 3 तो बुमराह शमी एंड उमेश या फिर बुमराह शमी दो सिराज स्पिनर खिलाएंगे तो कुछ नहीं सीखे हैं अभी तक. विकास. I don't think टेस्ट वाले जो स्क्वाड क्यों रखा है, मतलब 11 प्लेयर्स को खेलने वाले हैं वैसे टीम्स में, और उसमें उसमें भी 5 वो भी है कि यार एक ही चीज है जहाँ पे श्रेयस अय्यर वर्सेस हनुमा विहारी इज गोइंग टू बी पिक्ड बाय अजिंक्य राणे की जगह पे, और वो भी कंफ्यूजन नहीं होता अगर अजिंक्य राणे 2 महीने के लिए इंजर्ड नहीं होता. तो आई थॉट अजिंक्य राणे को ही लेके जाते, बट या लेके जाते. आई थिंक हनुमा विहारी शुड बी देयर. इट्स नॉट बिकॉज I love Hanuma Vihari. It's also Right. because Hanuma Vihari is a better test player than at least in the ye condition, English condition. Right. I think, yeah, I agree with you guys, man. I think the team pretty much picks itself. I think Shardul finds a place over there. There'll be only Yeah. place for one spinner. There'll be only place for one spinner for me. And I think इधर पे I think Hanuman Vihari मेरे लिए I think just gets ahead because यार क्योंकि वो भी he's far more experienced in terms of playing in overseas conditions than Shreyas Iyer, so that's why. But we'll move ahead भाई. या जिस चीज के लिए हम लोग बैठे हैं आज यहाँ पे, जो 6 टीमें बाहर हो गई है, बाय बाय कर चुकी है जो आईपीएल को, उनके बारे में बात करने के लिए कि व्हाट द एफ वेंट रॉन्ग विद दीस गाइस. वी हैव टू डिस्कस दैट. और इस बार तो बहुत कुछ मसाला है. मैं और विकास तो बहुत आई डोंट थिंक हम मैं और विकास ज्यादा कॉन्वर्सेशन इस में करेंगे. इट इज गोइंग टू बी बिटवीन मी एंड विघ्नेश एंड विकास एंड विघ्नेश. आई थिंक Yes. मेरे और विकास की कॉन्वर्सेशन ज्यादा होने नहीं वाली है बिकॉज वी नो ऑन व्हाट वी एग्री एंड वी डोंट नो ऑन व्हाट वी डोंट एग्री. सो यस द 6 टीम्स. और इस बार इतना मसाला है कि कौन कौन सी टीम ऐसा, अगर कोई वो क्या कोई वो योगा करता है और हेड स्टैंड करता है और आईपीएल टेबल को देखे तो उसको लगेगा कि हाँ ये सही टेबल है. मतलब दिस इज द टेबल दैट इज सपोज्ड टू बी. If you look from at number 10, can we have the table on the screen? Yeah, if we look from the number 10 spot, you see the big, the mighty, Mighty. and the fallen now. Mumbai Indians at number 10, CSK at second spot. So 9 trophies, 9 IPL trophies combined gone. Another one comes in for SRH, one more trophy, 10 IPL trophies gone. Then PBKR is the perennial जिसको बोलते हैं flops of the IPL. कुछ चेंज नहीं कर सकता वो. Nothing can change that. Maybe कभी मार्च में हम लोग कॉलोनाइज करेंगे तो PBKs might do well. तो और उसके बाद KKR है भाई साहब, ये भी वही टीम है एक कि हम लोग को लगता था ओहो. तो ये देखो 10 ट्रॉफी हो गई SRH एंड देन 2 और ऐड कर लो KKR, तो 12 आईपीएल आउट ऑफ 14 आईपीएल बाहर हो चुकी है.
So that is where we are with this IPL in this season. So yeah, we can get the table off the screen. We'll start with you know bottoms up approach लेते हैं, and let's go to मुंबई इंडियंस. स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट रोहित शर्मा से पूछा गया था कि सारे मैचेस मुंबई में हो रहे हैं, डू यू थिंक इट इज अनफेयर ऑन अदर टीम्स, एंड हिज रिप्लाई वाज टीम्स शुड build stadiums in their city if that's possible. That was his reply, and see what happened. So I don't know, cricket is a funny old game. तो भाई लोगों, जो भी देख रहे हो ये हम लोग इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे. विल टॉक अबाउट द टीम्स दैट पोस्ट सीजन की तीन कैटेगरी में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे. फर्स्टली इज what went wrong, basically क्या क्या गलत हुआ. We can have takes from Vignesh, Vikas, players who shown in this unsuccessful season for the franchise, and the third thing is prospects for the future कि next year उनकी अपने stadium में वो जाएंगे, वापस घर जाएंगे, not going to be in Mumbai. So maybe their players that they've selected is maybe more suitable to their home conditions rather than playing in Mumbai. So we'll see how their prospects line up for the next year also. तो yeah, as I said, विकास और मेरी ज़्यादा बात नहीं होगी, तो विघ्नेश से स्टार्ट करते हैं भाई. विघ्नेश, मुंबई इंडियंस at number 10, what went wrong bro? First of all, it started with the auctions. जैसे हमने auctions के समय भी discuss किया था. But as you say कि मतलब when you end a season with just 4 wins, you end last, so everything that could go wrong has gone wrong for Mumbai Indians, creating new unwanted records. 8 out of 8 losses opening इसमें. मतलब being a Mumbai Indian fan, आपको था कि यार 5 के बैच तो अब हम दुनिया हिलाएंगे, अब हम ये करेंगे वो करेंगे, बट pretty much sort of the only place उन लोगों ने दुनिया हिलाया तो आरसीबी अंदर आया. अपार्ट फ्रॉम दैट इट हैज बीन अ सीजन. अभी वी आर नॉट गोइंग देयर, वो लास्ट में आएगा शो में. डीसी का लास्ट डिस्कस करना है हम लोगों को. It has been a season to forget for Mumbai Indians, right from जो मतलब clarity होती है Mumbai Indians में, that was the biggest thing lacking this time around. Rohit Sharma did not appear that sort of decision maker who backs people. That there are a lot of so many players जो शायद second half में shine किए. They were not given enough chances in the first half. एक दो games में they played with 2 overseas players, and looking at their Indian core, मुझे मतलब समझ नहीं आया कि किसकी हिम्मत थी कि sort of sticking to 2 overseas players. It made zero sense to anyone. Yeah. And then it's for the first time that Mumbai has failed to qualify for 2 successive seasons. And at the start of 2020 we were thinking this is going to be an era of Mumbai Indians जहाँ पे हम लोग 7-8 टाइटल एक डेकेड में जीतेंगे. But it has been a far cry from it. Yeah. Vikas, what went wrong for Mumbai Indians? What went wrong? I think हम हर बार बोलते हैं कि शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, and you take their openers ईशान किशन, रोहित शर्मा. That's there. I mean, वहाँ पर समझ में आ रहा है कि तुम क्यों अच्छे नहीं खेल रहे हो और तुम्हारा क्यों अच्छा नीचे, तुम्हारी नीचे की टीम सारा डैमेज कंट्रोल में चली जाती है, and not using बुमराह properly. I think that was the biggest concern. ईशान किशन, रोहित शर्मा and जसप्रीत बुमराह, I think जो तुम्हारे मेन स्टेज होते हैं उनका परफॉर्म नहीं करना, I think that was the main reason. Apart from that, बीच में भी टीम सिलेक्शन भी काफी खराब था. I think ब्रेविस को इतने देर बाहर रखना, that made no sense. Bubble break. But नहीं, वो तो बबल, हाँ वो बबल का था उसको. But was it really? Yeah, it was. नहीं, that's the only explanation. Bubble break तो था. मैं ये पूछ रहा हूँ, was it asked by Devol Brevis? मतलब Devol Brevis ने बोला. Why would a young guy would not want to play यार? वो तो होगा कुछ, मतलब उसका रहेगा कुछ. I think there was no other reason to drop Brevis. I think वो जब that came through तो समझ में आया कि क्यों ड्रॉप हुआ है वो. Otherwise तो हमको समझ में आया था क्यों ड्रॉप हुआ Devol Brevis. He was great. Yeah, I think for me overall planning में बहुत ज़्यादा mistakes हुए इस बार, and बुमराह को काफी defensively use किया गया, and that's there. Mumbai is right there. ओके, तो मैं आई थिंक गोइंग टू विघ्नेश ने जो बोला था, विघ्नेश की दोनों बातें जो हैं मतलब वो आई थिंक दोनों बातों से मैं अग्री भी करता हूँ, डिसएग्री भी करता हूँ. दोनों चीजें हैं कि एक तो ये विघ्नेश ने बोला कि इट स्टार्टेड फ्रॉम द ऑक्शंस, इज वेयर आई डू अग्री कि ऑक्शंस में उनका जो बहुत ही एक वो था कि ईशान किशन को लेना ही लेना है, तो 15 करोड़ वहां खर्चा किया उन लोगों ने. सो दैट इज वेयर दे वेंट रॉन्ग. बट इन दी ऑक्शंस आल्सो वेयर विघ्नेश सेड कि क्लैरिटी नहीं दिखी. मेरे को थोड़ी क्लैरिटी जरूर दिखी मुंबई इंडियंस से कि
and where you always say, right, and this is a good segue into our second topic also, which I'll kick off also, which is their players who shown also. So we always talk about ki Mumbai ka jo scouting hai, that is so crazy, and again it happened again. Matlab, I know they finished 10th and everything is all right, but for me finishing 10th and finishing second is the same. I don't think बहुत ज़्यादा difference है उसमें. ट्रॉफी नहीं जीते हो तो हाँ, यू कैन हैव वट एवर, बट एक ट्रेजेक्ट्री होती है. मतलब पीबी के फिनिशिंग 10th इज मे बी नॉट ऐसा ट्रेजेक्ट्री से गया है. मुंबई इंडियंस का 10th इज अ प्रॉमिसिंग 10th, आई थिंक दिस, बिकॉज वो क्लैरिटी मुझे दिखी. आई थिंक दैट स्काउटिंग सिस्टम हैज वर्कड. तिलक हैज शोन द यंगस्टर्स. जस्ट लुक एट दैट यार. कार्तिकेयन, कुमार कार्तिकेयन, 6 डिफरेंट बॉल्स डाल सकता है वो यार, बंदा, विद द सेम एक्शन. सो दैट इज गुड. डिवाल ब्रेविस तो है ही, हमने बात की है उसकी. तिलक है, ऋतिक शौकीन इतना अच्छा उनको नया प्लेयर मिला है कि उस दिन जब वो एक टफ मैच था निकालने वाला, तो एकदम दिमाग से उसने बैटिंग भी की, नॉट जस्ट बॉलिंग. टिम डेविड, भरोसा किया 8.5 में. मतलब स्टिल यंग, आई एम जस्ट काउंटिंग हिम देयर. आई एम जस्ट सेइंग दैट scouting system for Mumbai Indians has worked, so that clarity has shown. And if Jofra Archer does join them, and I think a good spin addition to them also, I think this team is rocking, man, next season. Uh, yeah, सब obviously assuming कि वो दो ऊपर के players fire करे, that is obviously विकास का तो जो point है, that is obviously true. Yeah, players who shown for them, Viggy, Uh, who is basically your, yeah, yeah, it has to be looking at a player for the decade, next decade. तिलक वर्मा for sure यार. नंबर 1 बैटर, मतलब कोई अनकैप प्लेयर मुंबई इंडियंस के लिए हाईएस्ट रन स्कोरर होना बड़ी बात है इन अ टीम फुल ऑफ filled with stars. And Tilak, right from game 1, he looked cut above the rest, and then he showed what it takes. And from an India all format captain to be called, he's going to be the next big thing across all formats, is a great validation. And जैसे हम मतलब बोल रहे थे कि तिलक वर्मा is going to be the next big thing, to carry that tag along with him and to play that way, it was sensational. And he looked at ease. अब तक मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं है कि this guy has sort of any kind of weakness for now. Second season maybe might bring in a different challenge, but for now Tilak Verma definitely looks promising. And the other star जिसके बारे में मैं काफी skeptical था despite MI spending such a huge amount, was Tim David. Why, he's the every bit of Jallab that people were talking about. ये classic ex RCB हो गया ना. Yeah. But someone who has served you well, आखिरी गेम में जिता के गया, तुमको पहुंचा के गया. बिल्कुल. So the numbers didn't lie when they said कि Tim David has one of the best strike rates in last 2-3 years, and he proved that मतलब he is not that $1 million thing जो is a fluke kind of a thing. So, and the baton has already passed, I believe, Pollard to Tim David. So that count will be very gung-ho about the next season. Yeah. So continuing with that too, मतलब prospects for the future, मतलब कि what do you think next season is going to be like for Mumbai? Then I'll go to Vikas. Yeah. मतलब Surya's position at if Surya continues to bat at 3, so 4 and 5 might be one position a bit low for both Tilak and Duval Bruvis. So if they could figure out how they can sort of bring them ahead, या फिर कुछ भी अगर हो सकता है, तो these two stars are definitely going to shine for Mumbai, say for around 5 to 6 years. 3 पे कौन खेलेगा? अगर 3 पे सूर्या खेल रहा है तो 4 पे तिलक और 5 पे 4 पे तिलक is fine, right? I think. अच्छा, डुवाल के 5 काफी छोटा कम लगता नहीं, आई थिंक मारता है. ब्रेविस आते साथ देता है. मतलब मे बी यू कैन डू किशन की जगह डुवाल ब्रेविस आल्सो, दैट यू कैन डू. एंड देन Tilak can come 3. Surya is already playing well at 4, so that thing you can do also. Then Tilak also fits in, I think. Yeah, Vikas, दोनों चीजें भाई. Players who shown for them and prospects for the future अगले साल. Players who shown for them में कोई सीक्रेट नहीं है. बेसिकली तुम दोनों ने उन दोनों की बात की है. तिलक वर्मा, डेवॉल्ट ब्रेविस, अगेन टिम डेविड एज वेल. और तिलक वर्मा मेरे को बहुत ज्यादा बात अच्छी लगी, क्योंकि तिलक वर्मा हर सिचुएशन में फिट किया गया. मतलब फिट हो गया मुंबई इंडियंस से, कि उसको छोटा टोटल चेस करने भेजा, बड़ा टोटल चेस करने भेजा. काफी उसने हर बार थ्रू नहीं करवा गया. ऑब्वियसली ही इज अ यंग गाय, हर बार नहीं करवा सकता, बट ही हैज शोन हिज क्लास. ही हैज शोन कि क्या पोटेंशियल है, क्या दिमाग से खेल रहा है. वी हैव सीन हिज शॉट्स ओवर ऐसे
फाइन लेग अंदर वाले शॉट्स फिर वो ऊपर से मार रहा है, देन अगेन यस्टरडेज इनिंग एज वेल, तो उसने हर चीज में वहां पर फिट किया है. सो अगेन जैसे रोहित शर्मा ने बोला ऑल फॉर्मेट वाला प्लेयर दैट्स डेफिनेटली देयर, एंड आई डू अग्री विद द टीम डेविड वाला स्टेटमेंट विघ्नेश का कि बैटिंग पास हो गया है. आई विल डेफिनेटली सी, आई थिंक वी विल सी पोलार्ड नेक्स्ट ईयर, बट आई रियली डोंट थिंक कि इतना जितना इस साल लंबा चला है, इस साल लंबा खींचा है पोलार्ड, 7-8 मैचेस तक उसको खिलाया गया है. आई रियली डोंट सी कि वो हो रहा है. एंड टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर ऑफ मुंबई इंडियंस, अगर वही है तुम्हारे जो प्लेयर्स रिटेन हुए हैं, जो प्लेयर्स बड़े इसमें खरीदे गए, अगर वो खेलते हैं, अगर उनका अच्छा डिसेंट भी सीजन जाता है, देन दिस टीम इज गोइंग राइट एट द टॉप अगेन द नेक्स्ट सीजन. टॉप 4 में तो डेफिनेटली 4 ही है. या मेरे को भी ऐसे लगता है. बट एक क्विक नॉस्ट्राडामस प्रेडिक्शन दूं. Pollard to play the Narayan role for MI next season. टॉप पर ऊपर 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 घुमा के पॉली. नहीं, not नहीं, वो gonna कैसा happen. रखता है आजकल तो बैट को बॉल ही नहीं लगता है. अगर आर्चर अवेलेबल है तो फिर पोलार्ड की आर्चर को जगह भेजे, Archer is a good आर्चर को भेजे ऊपर good. टॉप. Good. Right, guys. That was Mumbai Indians. So yeah, 10th finish is definitely not a good look for a franchise like Mumbai Indians. इतनी बड़ी franchise है जो but I think आज इस पर उनके fans को, I think they were also understanding also, मतलब I think it was not like CSK कि उनको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है. Whom we will go to the next team is CSK only, but yeah, ending off with MI, it wasn't. I think the fans were understanding also. This is a work in progress team, and मतलब the structures and the basic, the foundation दिखती है कि I think it's being laid as a good foundation, it's a strong foundation. Let's see what happens next year. So that was Mumbai Indians, guys. Moving on to the next franchise, and these are the big ones. These are the ones, the yellow ones, the dirty ones. It's CSK, it's Chennai Super Kings, it's Mahi Bhai, it's Ravindra Jadeja. I don't know who it is. That is it. I mean, it's a little bit confusing. और जहाँ हम बोल रहे हैं कि मुंबई इंडियंस भले ही 8th फिनिश करने के बाद looks like a team, who might do that well कि एकदम से they can recover. CSK doesn't look like that. CSK का थोड़ा सा लगता है कि इनका rebuild process में थोड़ा ज़्यादा time लग सकता है. Because I think again with Mumbai Indians, as Vignesh said, I think it started from the auctions only. So CSK bhai, Viggy, what went wrong? The players who shown, and looking ahead for the next season prospects. क्या हो सकता है अगले साल? Yeah, we can go in one go only, bro. हाँ, दो चीजें हैं. जब आपने बोला कि मूविंग ऑन टू चेन्नई, द टीम दैट नेवर मूव्स ऑन, कीप्स बिल्डिंग. दूसरी चीज जो आपने बोली रीबिल्ड वाली, आई डोंट थिंक दे बिलीव इन रीबिल्ड. Viggy's सारे back. हाँ, सारे पुराने पुर्जों को ठीक करने में लगी रहती है. एंड यार मतलब द वन प्लेयर, वर्ल्ड का लीडिंग प्लेयर आर्ग्यूबली, यू गाइस विल एग्री, had everything going for him, had the reins of a very rich legacy kind of a cricket team, और IPL के end में उसकी चर्चा नहीं हो रही है. And this is not how Chennai functions यार. So this is one of the biggest thing that has gone wrong in the history of, मतलब माही इन लोग करते रहेंगे स्टार स्पोर्ट्स वाले, they keep playing all those old reels and stuff. But what happened to Jadeja is not ideal, especially अगर आप समझ सकते हो कि अगर पंजाब के टीम के साथ, हैदराबाद के टीम के साथ ऐसा होता है, those people don't have such large fan base to be honest, जहाँ पे सब फर्क पड़े. But for a team like Chennai, it does hurt to see a player of Jadeja's class being treated the way he was. We don't know exactly what went wrong, but yeah, exactly. just to appease how, one person, one power player in the group, और उसके इर्द गिर्द सब कुछ ये करना, I was never a fan of that, even while during their glory days 2021 में when they made a comeback. But this season it exposed. आपके एक प्लेयर जाके ट्वीट कर देता है कि आप रिटायरिंग, उसका सीन आके फिर बोलता है कि नहीं वो रिटायर नहीं हो रहा है. So all these sort of off-field issues has caught up with CSK, and unless and until there is a complete revamp, these things will keep happening. आपने देखा कि साई किशोर जैसा एक बंदा जो था, 2 साल उसने खेला नहीं, and he outbowled Rashid Khan in one of the league games. Exactly. So all those kind of things will hamper CSK, and all this has hampered CSK basically. Mukesh Chaudhary के अलावा none of the players
shown promise. मुझे ऐसे लगता नहीं है कि nobody came through. शिवम दुबे was a 50-50 selection and it went, मतलब उसने शायद 7-8 गेम ही उसने खेले होंगे. मुकेश चौधरी, biggest shining star for CSK. Devon Conway maybe might play the role of Faf du Plessis later. उसके अलावा प्रॉमिसिंग स्टार्स के चलते प्रशांत सोलंकी को मुझे थोड़ा सा ऐसे लगा कि he could have been given a long rope. मुझे आई लाइक व्हाट आई सॉ प्रशांत सोलंकी. बट जैसे आपने बोला, मुंबई इंडियन वर्क इन प्रोग्रेस, फैंस डिड मेक पीस विथ the fact, but CSK fans, the problem is they are making peace with the fact कि धोनी will again turn up and again eat up a. मुझे प्रॉब्लम बेसिकली ये है कि मतलब आप 50 के हो जाओ, आप खेलो, बट इफ यू डोंट आर नॉट प्लेइंग फॉर द नेशन, what is the point in playing an IPL? This is something that I'll never agree on, and is this But something that why? It's different now. Sometimes you're not good enough to play for the nation, but you earn money through IPL. No, that is you, where IPL you, you comes in. earn, but not at the cost of someone aspiring and someone who has the Why? You potential. are not a CSK fan. If a CSK wants to die with Dhoni, it's his problem. No, so Yeah, it's shouldn't bother ah, you in a correct. sense. He's So not. that He's is not. the problem with CSK. Yeah. What went wrong, and it will go wrong. मेरा ये मानना है. बट आई थिंक बहुत ही ज्यादा ग्रे पिक्चर पेंट कर दिया है विघ्नेश ने सीएसके के अराउंड एकदम. मतलब ये तो अनुराग कश्यप की मूवी बन गई एकदम. मैं डिप्रेस हो गया 2 सेकंड के लिए. अनुराग कश्यप अभिनव सिन्हा की मूवी आर्टिकल 15 टाइप का सीन हो गया है एकदम. एक सप्रेस किया जा रहा है दलित को. मतलब बट आई एम जस्ट I did सेइंग. not get much love when I expressed the same in all those CSK fan But groups. the whole point is कि but do you believe Vignesh, just because we need to talk around this a little bit, the Yeah. Jadeja thing, what happened? I'll also bring Vikas into it after this. Vikas, जैसे Vignesh ने बोला कि we don't know what happened ना, we don't know. It can either be कि there is fans का pressure कि धोनी को वापस लाओ, and we are made to look stupid under Jadeja, and Yeah. he's not मतलब वापस आओ, और उसलिए वो decision लिया गया, and then Jadeja was dropped from the team supposedly injury की वजह से ribs में जो भी है उसको. I mean, this is one theory that's going on, right? The second theory is basically a more understandable theory for a cricket fan, which is कि some players are not just good enough to be captains. Captaincy affects their game in a wrong way, and Sachin Tendulkar was also one of those guys कि जिसका game को negatively affect की थी captaincy. और Sachin Tendulkar himself, you can either say pussied out, or you can say he became, it's even bigger of a man to accept some, अगर नहीं है अगर तुम्हारे में वो चीज, तो for the benefit of the team कि बने नहीं रहना है मुझे captain को, I don't want that role if it's not helping the team. You can say it either ways. तो और हमने देखा भी है कि जडेजा की परफॉर्मेंसेस कैसे इफेक्ट हुई है आफ्टर ही बिकेम कैप्टन. भाई वो ऐसे कैच उसने कब छोड़े लाइफ में. वो नींद से 3 बजे उठा को बोलो जडू ऊपर कैच आ रहा है, ऐसे देख के कैच लेगा वो. तो मतलब ऐसे कैच जब मैच में दो दो छोड़े वो, तो ही इज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर, परफॉर्मेंस प्रेशर. And that's a real thing, bro. Performance pressure That's a real happens. I thing. think that which is basically, and then he stepped down and Dhoni sort of covered for this season. एंड इसी से मतलब मैं विकास पे जाना चाहता हूँ. आई थिंक विकास, व्हाट डू यू थिंक हैपेंड यार? मेरे को तो ऐसा लग रहा है सेकंड थिंग व्हाट हैपेंड इज व्हाट हैपेंड. आई थिंक See, इट्स अ जेन्युइन इंजरी. और आई वुड या बिलीव अभी के लिए, अभी तो आई विल बिलीव कि सेकंड थिंग वुड हैपन, क्योंकि अगर अपने को कुछ पता नहीं है डेफिनेटली जो एग्जैक्टली चीजें हैं, अगर वो पता नहीं है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ ग्रे नजर आता है, ऐसा समझ में आता है. बट इट्स ऑल आर माइट भी अपने दिमाग में चीजें हैं कि अच्छा ये ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है. लेकिन अगर या जब तक अपने को पता नहीं है, सो आई वोंट वांट कि या बॉस ये सोचा जाए कि ये सब कुछ या प्लॉटेड है, ऐसा ऐसा. या बट या एनीवेज राइटली we'll एग्री. go to your this thing. Yeah, we'll go to this thing ki what the f happened to या CSK या this दैट्स season, व्हाट आई वाज कमिंग and what टू. is the shining light for the next season, and the players you can look forward to. शाइनिंग लाइट थोड़ा से कम में बात करेंगे, क्योंकि while the Mumbai Indians fans were making peace with the whatever future they were seeing, and they were right Right. about it, I would like to believe that CSK fans were more or like वो excuses ढूंढ रहे थे. अरे दीपक चेयर नहीं है, अरे जड्डू नहीं है यार, जड्डू शाउट एमएस आउट विनय, कैप्टन. विनय भाई, चुरमानी भाई, शाउट आउट. हाँ. पर अरे आखिरी में वो भी बदल गए. या नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि देख, अरे दीपक चेयर नहीं है यार, दीपक चेयर नहीं है इसलिए. भाई दीपक चेयर नहीं है मतलब क्या पूरा पहले ये वो खत्म एक्सक्यूज करोगे था. क्या? हाँ. फर्स्ट फिर दैट वाज द एक्सक्यूज, अरे देन हमने इट चेंज टू समथिंग एल्स. इट्स चेंज टू व्हाट कि जडेजा कैप्टन था ना, जडेजा पनौती था.
not quoting. Like, these are Panotti, not my yes, words. These are not Panotti, my yeah. words. Panotti was जडेजा the one पनौती था being यार. mentioned. जडेजा जस्ट श्रीलंका सीरीज में मचा के आया है, और जडेजा Yeah. बोल रहा है कि बॉस जडेजा पनौती. अब एमएस आ गया. एमएस ने भी आके सारे मैचेस थोड़ी ना जीता है. एमएस ने भी आके कुछ मैचेस ही जीता है. ठीक है, ये सब कुछ चीजों के बाद नाउ वो जो रीजंस ढूंढना होते हैं ना कि कॉनवे को निकालेंगे, कॉनवे को नहीं, अगले साल ये प्लेयर्स को निकाल देंगे, बेन स्टोक्स को लेके आएंगे. बेन स्टोक्स के पीछे 15 लोग खड़े. अभी जितना प्रॉब्लम्स फ्यूचर के लिए चेन्नई सुपर किंग्स के पास है ना, आई डोंट थिंक किसी और टीम के पास इतने प्रॉब्लम्स होंगे, क्योंकि यू आर कैरिंग दैट बैगेज ऑफ अंबाती रायडू, यू आर कैरिंग दैट KKR will बैगेज beg ऑफ. to differ. नहीं नहीं यार, ये फिर भी बहुत I ज्यादा ही agree with प्रॉब्लम्स है. very valid क्यों? point. मैं क्योंकि completely agree with. तुम अंबाती रायडू के साथ खेल रहे हो, तुम रॉबिन उथप्पा के साथ खेल रहे हो. अंबाती रायडू बोल रहा है कि मैं इस सीजन के बाद नहीं खेलूंगा, तुम उसको बोलते हो कि नहीं तू सीजन में नहीं, तू खेलेगा, खेलेगा. तू खेलेगा, तेरे को मतलब जहां What पर a हम सोच farce. रहे थे, जहां पर शशांक हमारी एक बात चल रही थी, क्या वो सीएसके वो मैनेजमेंट है जो सोच रही है कि अगली बार कम बहुत ज्यादा पैसे रहेंगे, कंपटीशन कम रहेगा, तो हम नए प्लेयर्स खरीद पाएंगे. तो वो भी नहीं कर रहे. अंबाती रायडू को भी जाने नहीं दे रहे ये लोग. ठीक है. Yeah. सो ये जो इनको कुछ फ्यूचर नहीं है, बस ढूंढ रहे, जबरदस्ती ढूंढ रहे. नेक्स्ट टाइम दे आर, आई अग्री, विघ्नेश ने बोला, काफी तारीफ की मुकेश चौधरी की, लेकिन ऐसा है कि मुकेश चौधरी और दीपक चहर पूरा सिनारियो ही बदल देंगे. इट्स नॉट गोना हैपन लाइक दैट. ऐसा आई तो डोंट. बिल्कुल नहीं है. ऐसा I हाँ, don't think Vignesh said क्योंकि that also. नहीं नहीं, मैं Yeah. बोल रहा हूँ विघ्नेश, विघ्नेश ने बोला मुकेश चौधरी डेफिनेटली. वो जो बंच है, उतना 15-20 लोग थे, उसमें तो मुकेश चौधरी ही अच्छा खेला है विद द पैथेटिक फील्डिंग दैट ही हैड शोन, व्हाटएवर दैट इज. लेकिन उसके साथ मेरे को नहीं लग रहा बहुत ज्यादा प्रोस्पेक्ट है फ्यूचर में, क्योंकि मुकेश चौधरी और दीपक चहर दोनों पावर प्ले वाले बॉलर्स हैं ना तेरे को एंड में आके बॉलिंग देंगे. प्रशांत सोलंकी 2 मैचेस में क्या ही ज्यादा बोल सकते हैं. एमएस धोनी को मानना नहीं है. एमएस धोनी बोल रहा है कि चेपॉक में जाके ही Definitely not. एमएस धोनी मान ही नहीं रहे. एमएस माई भाई बोल रहे कि चेपॉक में ही थैंक यू बोलेंगे. I'm और with it. भाई मेरे को ये कि देख, सीएसके फैंस को प्रॉब्लम नहीं है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होना मेरे को तो चाहिए. बिल्कुल That is the प्रॉब्लम only नहीं है. thing. मेरे को तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है एमएस धोनी खेले भाई. अभी वो बिल्कुल खेलना है. मजा है. सीएसके फैंस चाहते हैं कि थाला करते रहे. आई हाँ, नो जो तू बोल रहा है वो मेजॉरिटी में है ऐसे फैंस, विघ्नेश. द सेम वंस आर देयर आल्सो, सीएसके फैंस. बट मैं तो एक से भी नहीं मिला हूँ. मुझे आई होप दे आर देयर. हाँ मतलब भाई. कभी एक टाइम पे एक मीम था, बोले कि धोनी इतना हम्बल है कि वो जब बैटिंग करने जाता है ही जस्ट यूजेस अ बैट. This is अगर ऐसे सुनील फैंस है. गावस्कर का स्टेटमेंट है क्या ये कुछ? Looks I something was so that comes tired came from after Sunil the Gavaskar. last league match. Rajasthan made it to the playoff. Rajasthan qualified at number 2 and the coverage was about Dhoni. तो मुझे था कि यार get ये तो over है. it. See Vignesh, that is the whole thing. I can understand मतलब कि where you're coming from. Again, it's CSK fans issue, bro. उनको धोनी धोनी करना है. If they want to die with MS Dhoni, if you want to jump the bridge with him, off the bridge with him, तो अब उनकी मर्जी है. मतलब कि अभी क्या बोल सकते हो, अभी ठीक है. But yeah, everybody who understands cricket would understand. Yeah, he adds his qualities as captain and everything. But it's not like कि जडेजा से हटा के. So मतलब my take over here is the negatives. I think for Chennai Super Kings is of course the deadwood बोलते हैं ना जिसको, वो जो उनके पास इकट्ठा हुआ है, ये उथप्पा और ये जो वापस उन्होंने इकट्ठा किया है, वो जो चला किया गया था है उनके रे. पास, उन्होंने 12 वापस करोड़ लिया है, में पूरा दोनों मिल इकट्ठा रहे हैं. किया है वो. हाँ, इवन ब्रावो इन अ टर्म की कितना ही खींच लोगे रे, कितना ही खींच लोगे. मतलब कि इवन धोनी तो मतलब that deadwood needs to be cleared, and that is also that positive, because then that clears a lot of purse for them to actually go and dominate in a annual auction. मतलब कि they can outbid, जैसे पंजाब कर रही थी ना किसको इस साल, और इस एसआरएच बार कर रही थी बाद में. हाँ, तो वो कर सकते हैं. वो दे कैन आउटबिड बिकॉज 12 करोड़ धोनी, 10 करोड़ राइडू प्लस उथप्पा. उथप्पा. सो दैट्स दैट 25 35 30 ब्रावो ले लो तो 30 करोड़ तो उनके बैंक में वैसे ही है. मतलब अगर आई थिंक दैट कैन टर्न इनटू अ एडवांटेज आल्सो if they try to take that route. Maybe that is a strategy. They're just too smart. They're playing 5D chess and we don't understand. ऐसा हो सकता है. मतलब most possibly ऐसा नहीं है. It's just bad auctioneering. But we never know, man. 5 बार जीतने वाली टीम के साथ कुछ भी हो सकता है. But also captaincy issue short करना बहुत important है. So these are the two problems that they face, that clearing the deadwood, which is also an advantage. But captaincy is a bigger that's this thing for them, that now that Indian captains are also consumed, right? KL Rahul, Hardik Pandya, Mayank Exactly. Agarwal, these guys are already, Shreyas is there. So
it's difficult. They have to find somebody. Ben Stokes को लाके captain बनाओगे, foreign player को एकदम से CSK का. I don't know that can work or not. So I think that is a big issue. Positives, I think I'm a little more optimistic than you guys are. उनके जो future है उसको लेके little more, not too much more, but I am optimistic क्योंकि अब आगे उसमें भी प्रॉब्लम तो है कि ये पथिराना और थिक्साना बड़े अच्छे लगे हैं, बट वो उनको खेलने देंगे नहीं तमिलनाडु में. तो आई डोंट नो इफ दे विल कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट, द तमिल गाय पीपल विल कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट कि नहीं अब दैट्स अ स्टैंड दैट वी हैव टेकन, और अपनी सी बिलवेड सीएसके के लिए वो जाने देंगे वो चीज को. दैट वील हैव टू सी नेक्स्ट सीजन व्हाट हैपेंस, व्हाट काइंड ऑफ रेजिस्टेंस दे फेस, बिकॉज दोस टू गाइस हैव बीन वेरी इंप्रेसिव, स्पेशली चेपॉक के बीच में. Thiksana will be very difficult. It's difficult to pick him off his hand. And Pathirana is obviously, we've seen him in the last 2-3 games. He has that thing. Yorker डालता है वो उसी accuracy से, तेज है वो, deceive करता है वो. I don't, अगर वो वैसे ही अगर slower Yorker develop कर ले अवलिंगा की जगह, तो वो तो deadly है रे भाई, deadly, बहुत deadly है. And then सिमरजीत की बात नहीं किया तुम लोगों ने. मेरे को तो बड़ा अच्छे लगे पाजी. आपने जरूर बात की मुकेश की. आई थिंक सिमरजीत इज अ स्लाइटली बेटर बॉलर देन मुकेश इन माय ओपिनियन. आई थिंक ही शुड बी टॉक्ड. भले विकेट नहीं मिले उसको, बट द लाइन लेंथ दैट ही मेंटेन्स एंड द बाउंस ही गेट्स एंड द ईज ऑफ हिज एक्शन बहुत ज्यादा अच्छी है उसकी. तो ही इज दैट काइंड ऑफ बॉलर, दैट यूटिलिटी बॉलर दैट मुकेश चौधरी ने, क्या नाम था, वर्ल्ड कप गया था, शर्मा, मोहित शर्मा. Mohit Sharma, that kind of CSK bowler, VRV, नहीं VRV नहीं, मनप्रीत गोनी, that kind of a bowler वो हो सकता है. I think I had more Simmer से ज्यादा मुझे, I had that better feeling with Simmer. उसके बाद थिक्साना पथेरा, तो I think थोड़ा सा उम्मीद है, ऐसा नहीं है यार. Convoy is another this thing where he can replace Faf. He's shown that he can be that replacement in the long term. So if they find a good batsman, if they find a good leader, if they find the deadwood replacements जो 3-4 लोगों का है, इनके पास पैसे हैं. The good thing is they can, because they have the money. So yeah, They have the money. things can turn quickly. they have the money. The problem is we think they have the money to do good things, but Oops. Hello? Yeah. Sorry. मेरे ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम था. I'm fine, right? I'm audible, guys? yeah. You're audible. एक मिनट भाई, एक मिनट. हेलो. हाँ, we can hear you. Yeah, all right. ठीक है भाई, we'll move ahead from CSK. I think I don't think they're anywhere close to breaking the top 4 yet next season, but I think they'll not be ninth next season is what I'm saying. But I think you guys are saying they'll be in the top bottom too, right? High chances. High chances. Vicky doesn't mince his words. हाँ, high chances. चलो भाई, आठवीं टीम जो हमको लगा था इस बार 9वीं या 10वीं में से होगी, तो they've improved. SRH आठवीं पोजीशन में. भाई टेबल दिखाएगा क्या एक बार? SRH आखिरी पोजीशन पे है. हम एक बार जल्दी से टेबल देख लेते हैं. दिस इज SRH इज SRH 13 गेम्स, एक बचे हैं. सो दिस इज अ कैवियट कि SRH 8th में होता है या 7th में होता है. एक गेम बचा है, आज है वो गेम, चालू होने वाला है 25 मिनट में. सो वी डोंट नो दैट, बट ऊपर नीचे रहेंगे, एक्सचेंज पोजीशंस ही करेंगे ये लोग. आई थिंक एक पोजीशन ऊपर केकेआर के ऊपर जरूर जा सकते हैं, बट इट्स द सेम थिंग. सो वील टॉक अबाउट SRH फर्स्ट. विकी, ऑरेंज आर्मी और नथिंग, हाउ डिड द सीजन फील टू यू? As compared to the auctions और ये सब देख के हमने जैसे प्रेडिक्ट किया, I think SRH would obviously disappointed कि playoffs नहीं गए, but they should not be as worried as other fancy teams in the IPL should be, क्योंकि वहाँ पे जो सारे players जो हैं, जैसे विकास ने मतलब काफी टाइम मेंशन किया, there is a promise of a good solid 3-4 years ahead of SRH. अगर आप देखो, उमरान मलिक made the most waves and then doing things at the pace unheard of an Indian seamer already. And मतलब ऐसा कोई प्लेयर अगर एक अंडर परफॉर्मिंग फ्रेंचाइजी में खेले, इट इज वेरी इजी फॉर हिम टू फॉल ऑफ द रेडार, बट उमरान मलिक कंटिन्यू टू डू वेल. उनकी शायद एक ही प्रॉब्लम थी, अगेन इट केम बैक टू केन विलियमसन. मतलब he made a couple of shocking errors captaincy wise which we don't normally associate with Williamson. और वो शायद unlike धोनी वो बैट के साथ बैटिंग नहीं कर रहे थे, तो that was another problematic.
if Williamson would have fired, the top order would have looked very, very different. क्योंकि Abhishek Sharma was a big Yeah, revelation to me. ये कभी yeah, लगा नहीं था कि he would, have such a good season. yeah, Markram, Pooran, all these are stars who are sort of building into their peak years of international cricket. Maybe Marco Jansen is someone I'm always looking forward to. Shashank Singh was a surprise. So there was a lot of good things, but शायद उनके senior players, especially Williamson, disappointed, and वहाँ पे उनकी campaign derail हुई थी yeah. जैसे. I think बहुत ज़्यादा tough नहीं है SRH का analysis. I think हम्म, Vikas, anything या different that you think नहीं from नहीं, Iggy? कुछ डिफरेंट नहीं है, लेकिन मैं मतलब ऐसा साउंड नहीं करना चाहता हूँ कि मैं विलियमसन को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता, लेकिन आई थिंक देख लो Sound नहीं अभिषेक करना शर्मा। चाहता हूँ मतलब पर देख करता लो, हूँ देख लो basically. was a नहीं नहीं, good one. लेकिन देख अभिषेक शर्मा खेला, राहुल त्रिपाठी खेला, माकरम Yeah, बहुत ज्यादा अच्छा खेला, yeah. निकोलस पूरन बहुत कम जब मतलब मिला, कम चांसेस, हाँ, जब जब मिला मिला खेला तब इस साल वही एटलीस्ट विकेट पहले चाहिए। से तो बाप खेला है, एटलीस्ट पहले बाप सीजन से तो बाप बाप खेला खेला है. है। हाँ, शशांक सिंह को चांसेस नहीं मिल रहे थे, एंड आई थिंक दे वर बैडली मिसिंग दैट वन स्पिनर जो या वो वॉशी सुंदर भी के बीच में इंजर्ड हुआ, एग्जैक्टली फिर सुंदर या आ रहा है वापस जा आया रहा है आ लास्ट रहा है में. जा रहा या है, एंड विलियमसन 100 के अंदर स्ट्राइक रेट रखना फॉर द ओपनिंग पेयर इज या क्रिमिनल, इज या क्रिमिनल। मतलब या हम हर बार केएल राहुल के बारे में बात करते हैं, लेकिन वी आल्सो टॉक अबाउट हाउ ही कन्वर्ट दैट या later of his inning. या He simply just wasted the power play and he's done. मतलब 12 100 के अंदर किसी भी ओपनर का, किसी भी टी20 प्लेयर का स्ट्राइक रेट रहना क्रिमिनल फॉर द क्रिमिनल. होल सीजन 13 या मैचेस ब्रो, it's या not accepted. I think that's the या only reason SRH is, या क्योंकि आई अदरवाइज थिंक क्या फाइन पेस बॉलिंग अटैक है भाई। कार्तिक त्यागी इज या देयर फोर्थ पेसर, Yeah. जो भाई वो भी खुद 150 यार. 150 डालता है यार, 150 Yeah, डालता yeah, yeah. So I want to go there to SRH. Firstly, I want to apologize to Queen Kavya. I absolutely underestimated her. She's quite a little genius in herself. अरे है। हंस क्यों रहा है? तेरे को पता ही है मैं काव्या सिंप हूँ भाई. एंड आई हैव नो दिस थिंग शेम इन एडमिटिंग दैट. जो है वो है, सच दुनिया के अब सामने आ ही स्पाइस जाता है. पे लाइफ लॉन्ग फ्री मिलने वाले हैं अभी. hopefully hopefully. So yeah, I got her wrong. She's quite a genius. और जो भी जिससे भी वो फोन पे बात कर रही थी, हमको पता नहीं था वो किससे बात कर रही है, बट स्मार्ट था वो हमसे तो डेफिनेटली, क्योंकि हमको लगा था कि टीम असेंबली इतनी अच्छे से हुई नहीं है. But they understand, and when we'll come to GT also, this thing will come कि they understood कि बॉलिंग कितनी जरूरी हो गई है इस बार आईपीएल में, अब कितनी जरूरी है. आई थिंक पहले सीजन्स में ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन था कि बैटिंग कितनी जरूरी होती है, T20 आके धूम धड़ाम. Bowling is a different skill that has developed in T20. Stopping runs has become a different. Someone like an Harshal Patel can have an absolute magnificent career. जो एक टाइम पे वो Yeah. अगर गली में भी खेलता तो उसको इतनी वैल्यू नहीं देते कि अरे हाँ खेला हुआ है थोड़ा बहुत लाल बॉल से कहीं किसी क्लब में, वैसा बॉलर. तो आजकल अगर ब्रेन है आपके पास एंड यू हैव कुछ भी थोड़ा सा स्किल सेट चाहिए. यानसन का बाउंस इज अ स्किल सेट फॉर हिम. सो दोस काइंड ऑफ डिफरेंशिएशंस जो थे इन लोगों ने उठाए बॉलिंग में, उमरान मलिक को रिटेन किया. Man, that has been the best thing for SRH. Matlab, that has been the best thing for SRH, for India, for us watching, for Indian fans. I think for world cricket also. Once in one decade, a bowler rolls around bowling 160, who can bowl 160 actually has the potential. He 100 miles per hour touch करे. So that's a very exciting thing for SRH that's going out. हम लोग मैच भी देखने गए थे, मैं और विकास. एक ही मैच देखने गए इस बार पूरे आईपीएल में. विकास एक ही मैच देखने गया ना? तू ज्यादा गया था क्या? एक ही गए बट वो दिल्ली वर्सेस 157 एसएच गए, और 157 देखी या नहीं देखी, क्योंकि वो नहीं देखी। जब तक कर आई तब तक बॉलर हाथ में थी कीपर के. सो it's been a revelation, and he's excited everybody. And that spell, वो कौन सी टीम, केकेआर के नहीं, मुंबई के KKR. अगेंस्ट, केकेआर के जीटी अगेंस्ट. ने उसने 5 विकेट हॉल ली थी. थैंक यू हाँ, हाँ। उनके अगेंस्ट भी 5. या So yeah, that has been something for them. Williamson यार massive disappointment. 100 के नीचे कौन बनाता है? ऐसा लगता है कि पुल शॉट में ही रन आ रहे थे उसके, और कहीं पावर ही नहीं जनरेट कर पा रहा था विलियमसन. बस जब हुक मार रहा था तभी, या पुल मार रहा था तभी शॉट जनरेट. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. एक और प्रॉब्लम है, बैटिंग डेप्थ की थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी मुझे, क्योंकि पूरन हमेशा नहीं. आई डोंट नो दैट Samath को maybe that retention did not work out, or maybe that Shashank Singh वाला spot. I think that is another spot for them to worry about. बहुत सारी टीम के लिए है, इट्स नॉट अ ह्यूज कंसर्न, क्योंकि कई टीम के लिए फिलर्स कर रहे हैं वो चीज कवर.
आरसीबी के लिए शहबाज है, एंड देन दिल्ली के लिए ललित कर रहा है. आई अंडरस्टैंड द क्वालिटीज कैन बी अ लिटिल अप एंड डाउन, बट दैट्स देयर. तो या आई थिंक दैट इज देयर. आई मीन ज्यादा था नहीं कुछ एसआरएच के लिए बात करने के लिए, जस्ट बट या एज विघ्नेश सेड, आई थिंक लुक्स एक्साइटिंग फॉर देम. आई थिंक दैट बॉलिंग इज सॉर्टेड. एक और चीज भाई, जो हम लोग को एक बहुत बड़ा डाउट था दो बॉलर्स का, those two have bounced back not just in the IPL but are in contention for the World Cup. Bhuvi and Nattu. Absolutely, man. Bhuvi and Nattu. तो वो दोनों को हम ग्रैंड ओल्ड गॉडफादर्स ऑफ इंडियन टी20 बॉलिंग को हम लोग छोड़ नहीं सकते, मतलब बात करने का. एब्सोल्युटली ग्रेट सीजन फॉर बोथ ऑफ दीस गाइस. परफेक्ट एक्चुअली बैलेंस फॉर उमरान's बॉलिंग एज वेल. एक्चुअली उमरान के बारे में एक चीज है कि जो सारे फैंस तो थोड़े कम हो रहे थे ना ऑल ओवर द, मतलब हैदराबाद का वो टीम होती है न्यूजीलैंड वाली टीम जिसको सब लोग प्यार करना चाहते हैं. राशिद के लिए करते थे, वार्नर के लिए करते थे. अब वो जाने के बाद में थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो रहे थे. गुस्सा, सब गुस्से थे भाई, सब गुस्सा थे एसआरएच के लिए. अभी वो वापस प्रेम, या हाँ, थोड़ा सा उमरान की वजह से थोड़ा लोग वापस आ रहे हैं यार. उमरान को देखना है, उमरान को एक्साइटिंग प्लेयर बोलते हैं या. एंड भाई त्यागी आल्सो यार, पता नहीं कम खेला है वो सीजन, बट वो जगह नहीं थी या क्या था, बट ऑन पिचेस लाइक मोहाली एंड मुंबई नेक्स्ट ईयर दे कैन प्ले दीस गाइस. दोनों को खिला सकते हैं वो. चार फील्डर पीछे, रिंग के बाहर चार फील्डर पीछे खड़े हैं सारे. इट्स गोना बी क्रेजी. तो या दैट वाज एसआरएच. होपफुली अ बेटर सीजन फॉर देम नेक्स्ट ईयर. या तो हम लोग चाहते हैं अगली फ्रेंचाइज भाई लोगों बात करने के लिए, व्हिच इज आई थिंक ज्यादा डिफरेंस नहीं है. पीबीकेएस पंजाब किंग्स, जिससे काफी उम्मीदें थी लोगों को, स्पेशली विकी भाई को तो बहुत ज्यादा उम्मीदें थी. रेटिंग में तो विकी भाई सांता क्लॉज बने हुए थे रेटिंग जब हम लोग दे रहे थे प्री आईपीएल. तो ये दिल्ली के लिए और बीबीकेएस के लिए विकी भाई की बहुत रेटिंग्स थी, बट आई थिंक सबको डिसअपॉइंट जरूर किया. और एक कोई विलियमसन जो बैटिंग कैप्टन जो नहीं दिया है, इनके लिए भी आई थिंक एक बैटिंग में वो प्रॉब्लम रही है. मयंक की बैटिंग, नॉट इज कैप्टनसी से जरूर मयंक ने सरप्राइज किया है, बट द बैटिंग इज नीड्स टू बी डिजायर्ड फॉर, बिकॉज ही इज एन ओपनर एंड बेस्ट ऊपर आया है तब से ही इज बिन बंजारा, वो घूम रहा है इधर से उधर बैटिंग लाइनअप में. सो या पीबीकेएस, विकी, द what went wrong for them, क्यों नहीं किए थी स्पेशल टीम होने के बावजूद, इकट्ठा करने के बावजूद क्यों नहीं क्वालिफाई किए, the guys who shown and the prospects for the future. What do you want to say? I like to quote Ajay Devgan यहाँ पे, कुछ नहीं बदला वाला. हमेशा एक विन के कारण नहीं बोला. हमेशा एक विन के कारण लोग रह जाते हैं प्लेऑफ्स में क्वालिफाई ना करने को. बट इवन पंजाब विल एग्री कि दिस वाज द बेस्ट स्क्वाड दे हैड असेंबल्ड आफ्टर द 2014 या. मयंक का बैट से रन ना निकलना, शिखर धवन ऑल्सो मे बी, मतलब they would have expected more considering the statesman that he is, a kind of form that he was in. शायद they could have expected a bit more and they were not wrong if they expected more from him. और Bairstow भी मतलब शायद जब season almost अपने end में आया was when he started coming into his own. शायद 3-4 games he took. Odean Smith वाला जो experiment था after a one game. Oh yes, that is a big thing. तो ये सब मतलब उनकी बैटिंग डिपार्टमेंट में ही थी. एंड एज कंपेयर्ड टू देयर बॉलिंग व्हिच वाज आर्गुएबली देयर वीकर सूट, इट स्टूड अप मेनली बिकॉज ऑफ अर्शदीप सिंह. And that man is having sensational IPL after IPL and rightly rewarded with an India call-up. Kagiso Rabada came into his own. Rahul Chahar blew hot and cold, but there is a lot of promise in the bowling department. मुझे ऐसा लगता है. Big fan of Liam Livingstone, considering मतलब every game. We are all converted now. We are all converted. We were skeptics कि IPL में अभी तक नहीं किया है, but we are converted now. करेक्ट. और 117 वाली जो उसने हिट मारी थी यार, मजा आ गया था देख के. That was one of the highlights of the IPL. And then another player who impressed me, surprised me, मतलब whom I knew nothing about was Jitesh Sharma. मतलब इतना unknown quantity था and he played with so much clarity, gave a lot of joy to cricket viewers. मुझे ऐसा थोड़ा सा मेरे को उसमें थोड़ा सा राहुल त्रिपाठी दिखा मेरे को उसको थोड़ा सा जितेश. But let's see how he progresses in the future. We'll have to see. Vikas, same thing, same order you can say, मतलब भाई कि where it went wrong, players जो थोड़ा सा शाइन किए उनके लिए सीजन, और अगले साल कैसा लग रहा है पंजाब किंग्स का. देखो प्रॉब्लम वहां पर समझ, जो जैसे आपने जैसे ऑलरेडी मेंशन हो चुका है यहाँ पे कि मयंक अग्रवाल का फॉर्म एंड ऑल एवरीथिंग इज देयर, लेकिन आई थिंक देयर इज अ मैसिव कंफ्यूजन यार. अगर ये पहले से सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए था, बेस्टो कहाँ बैटिंग करेगा कहाँ नहीं करेगा, और इसके लिए भी काफी लेट हुए.
वो बेयस्टो अगर फेल हो रहा है, दे कुड सी बिल्कुल कि बेयस्टो फेल हो रहा है, तो वहां पर मयंक, और इतना नीचे मयंक को भी डालने की जरूरत नहीं थी, मयंक कुड कम एट नंबर 3, और वहां पर वो सॉर्ट हो जाता था अगर शिखर धवन, बेयस्टो एंड मयंक अगर आते, लिविंगस्टन को तुम नीचे रोटेट करते घुमा, देन वो काफी हद तक सॉर्ट हो सकता था। आई वाज रियली हैप्पी विद मयंक्स कैप्टेंसी, आई से, बट इतना भी नहीं, लेकिन मेरे को लगता है ये मैनेजमेंट का ही इशू है बॉस, ये मैनेजमेंट का इट ही ऑल कम्स इशू डाउन है। टू अनिल कुंबले इट ऑल इवेंचुअली कम्स फॉर डाउन टू अनिल यही कुंबले एंड द क्वेश्चन था, टीम। वाज इट केएल और वाज इट वाज इट, बट देखो अभी यार, भी वो पूरी तरह से पता नहीं बोल सकते हैं नहीं, बट क्योंकि उधर उधर भी बीजी है जीती क्योंकि है। वो, हाँ तो वो कवर कर लेता है, बट या आई बट गेट व्हाट आई यू से। डेफिनेटली थिंक कि यार इन्होंने मैनेजमेंट के ऊपर भी थोड़ा सा देखना चाहिए। इट्स नॉट ऑलवेज प्लेयर्स, इट्स डेफिनेटली मोर ऑफ प्लेयर्स, लेकिन तुमको पीछे से भी कैसे सपोर्ट मिल रहा है, कैसे असिस्ट मिल रहा है, क्या क्या क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है या नहीं, या तुम कौन से टैक्टिक्स क्या है चेंजेस तेरी, कर रहे हो, स्ट्रेटजी टैक्टिस क्या क्या है हो, तेरी, बैटिंग एग्जैक्टली। ऑर्डर क्या होनी चाहिए। ओडेन स्मिथ खिला रहे हो, ओडेन स्मिथ नहीं खिला रहे हो, तुम या लिविंगस्टन को कब ला रहे हो, आई थिंक दैट या मेड, एंड आई नहीं आई बिल्कुल बिल्कुल, अगेन और ये सेम चीज यार, ये सेम चीज की वजह से अगर मयंक, अगर नेक्स्ट मतलब यही सब सेटअप रहने वाला है और ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं है, मेरे को नहीं लगता एज अ प्लेयर्स इनके पास कुछ कमियां है। मे बी एन एक्स्ट्रा स्पिनर वुड हेल्प, लेकिन क्योंकि यस अगर मोहाली यस, में मैच रहेगी, एन तो एक्स्ट्रा नहीं है स्पिनर फिर तो कुड फास्ट हेल्प। बॉलर वुड भी नहीं, मतलब मोहाली में तो फास्ट बॉलर ज्यादा है, पेसर्स सीमर्स का ज्यादा रोल है लंबा भी तो। ग्राउंड होता है ना, या फंस भी या सकते ट्रू हैं, ट्रू, सो दैट विल yeah. आल्सो या Apart from that, I think it's all management and एक नया fresh approach लाके अगर वो कर सकते हैं तो कर सकते हैं, otherwise या सेम चीज मतलब मिलेंगे तुमको 5-6 या वीव नंबर पे। कवर्ड, या वीव कवर्ड मतलब पीबीकेएस मोस्टली, मतलब हाँ, बट दो तीन चीजें दैट आई वुड वांट टू ऐड एज वेल, मतलब कि या दैट होल थिंग, नीचे लोअर मिडिल ऑर्डर का ऑडियंस स्मिथ को ट्राई किया पहले, जितेश का भी कोई ऑर्डर नहीं था, फिनिशिंग कर रहा है भाई जितेश, हाउ कैन यू क्या एक्सपेक्ट, मस्त मतलब कर रहा इवन, था वो दिल्ली वाला मैच, हाँ अच्छा कर रहा था मतलब वो बेचारा। जो भी है, मतलब कि बट नहीं एक्सपेक्ट कर सकते ना आप कि उसको उस रोल में नहीं, भेजो। एग्जैक्टली देन एग्जैक्टली। अगेन जो तुम दोनों ने मेंशन नहीं किया, आई थिंक एक जगह है, मतलब कि प्लेयर को बोल रहे हो, वो पैसे भी मिल जाएंगे वहां पे, शिप आउट भी कर लोगे, दैट इज एसआरके। वो तो Yeah. मतलब कि दो बार चूना लगा गया भाई वो मतलब मतलब कि आज खेल रहा है। हाँ मतलब ठीक है, बट वो ही हैजंट लुक्ड, मतलब ऐसा लग रहा है कि बॉल पहले निकल जा रही है, बैट बाद में आ रहा है उसका, ही हैजंट लुक दैट इंटरनेशनल क्वालिटी एज वेल, मतलब तो खेलना ही नहीं था यहाँ पे, मुझे ऐसी फीलिंग आई। हाँ ही वाज जस्ट हाँ वेटिंग यार, फॉर द पर 9 करोड़ मिले हैं यार आपको, आई डोंट नो, मतलब इट्स इजी टू बैश डोमेस्टिक बॉलर्स in Syed Mushtaq Ali playing for Tamil Nadu, but when it comes to a little higher level of cricket, sometimes people don't या transition that well. Maybe that is the case with him. तो वो I think that is where वो 9 करोड़ लेके ऑडियंस में भी काफी महंगा 6 करोड़ के ऊपर गया था. So I think that is the place that they can replace someone with, कोई नीचे एक बंदे को ला सकते हैं, क्योंकि जितेश अच्छा वो है, वो डेफिनेटली एक है कि वो एक प्लेयर भी अगर ऐड हो जाता ना, वो एक लोअर मिडिल ऑर्डर, समवन लाइक अ मिच मार्श फॉर एग्जांपल, अगर ऐड हो जाता वहां पे, तो वो बॉलिंग भी, क्योंकि उनको पास फिफ्थ बॉलर की या फोर्थ बॉलर की भी कमी है एक, राहुल चहर, रबाडा, और उसके बाद, तो आई थिंक दैट इज आल्सो थिंग, री इमर्जेंस ऑफ रबाडा इज आई थिंक अ वेरी अमेजिंग थिंग फॉर देम आल्सो। मोहाली में बहुत अच्छा वो करेगा, दैट हैज बीन अ गुड थिंग फॉर देम, एक्सप्लोसिव तो है ही, उनकी बैटिंग तो है ही, अर्शदीप इन द इंडियन टीम नाउ, ही इज जस्ट गोना ग्रो एज अ बॉलर अब और ज्यादा, तो आई थिंक बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करने हैं पंजाब किंग्स को, जस्ट हियर एंड देयर एवरीथिंग, एंड यार आई थिंक इट्स, आई थिंक एक तो इट्स कोच में भी लुक beyond, yeah, मैं वही बोलने आया था, I think they should look beyond Kumble. I think it's time, I think they've seen it with different teams, different captains, different setups, that he's not able to achieve the results. I think sport should be a result based business, क्योंकि जब तक आपकी टीम पिच पे परफॉर्म नहीं करेगी, तब तक आपकी फ्रेंचाइज में एडवर्टाइजिंग वाइज भी, जस्ट स्पॉन्सरशिप वाइज भी पैसा कम ही रहेगा, मतलब दैट इज व्हाई द थ्री फ्रेंचाइजीज आर वेट दे आर, मतलब आरसीबी इज एन अनोमली, वो अलग चीज है, बट विल सी। तो अगली टीम भाई पीबीकेस हो गई है, पीबीकेस की भी हम लोगों ने बात कर ली, वो वेयर मतलब मूविंग फास्ट टू क्विकली विद दिस टीम्स ना, इतने बड़े सीजन के बाद, आई डोंट नो, हम उनकी लोग खेल प्रो भी बन वैसी गए ये नहीं है। या हम लोग प्रो बन गए, ऐसा भी हो सकता है। सिक्स प्लेस यार, ये तो इट आई थिंक, आई डोंट नो, दिस इज आई थिंक समथिंग दैट वी नेवर सॉ कमिंग, आई थिंक मे बी जीटी को भी हम लोग एक तरह से इमेजिन कर सकते थे, बट हम लोग को देखना चाहिए था केकेआर के बारे में, वी शुड हैव ऑब्जर्व्ड मोर अबाउट व्हाट केकेआर में रॉन्ग है, एंड आई थिंक वी शुड हैव प्रेडिक्टेड बेटर, बिकॉज हमारी रेटिंग्स में, कलेक्टिव रेटिंग में, दे वर आई थिंक थर्ड और फोर्थ, आई थिंक दे वर फोर्थ, आई थिंक
So we had them qualifying for the playoffs. They were close also, but I think this is where we were absolutely wrong in our predictions. I think Vicky, how would you look at KKR season and players that shown for you, and how does it look going ahead? केकेआर का मतलब पोस्ट दी ऑक्शंस मैंने मेंशन किया था अपने ही चैनल पे, जहाँ पे आई सेड कि पोस्ट पैट कमिंस एंड श्रेयस अय्यर दे सॉर्ट ऑफ स्टॉप बाइंग पीपल इन दी ऑक्शंस एंड Yeah, मोर ऑफ द पीपल दैट दे बॉट वाज लाइक एन yeah, आफ्टर थॉट, अच्छा हमें sure, खरीदना sure, पड़ेगा. yes, एंड उसके कंपैरिजन में द परफॉर्मेंसेस दे पुट, मुझे ऐसे लगा कि इट वाज वेरी वेरी सरप्राइजिंग फॉर केकेआर टू एंड वेयर दे डिड. yeah, मतलब going into the last game they still harbored chances of making it to the playoff was a big thing यार. I did not see it coming. Starting के जो initial euphoria था, 3 wins out of 4, मुझे ऐसे लग रहा था कि it is just the bubble is about to break, and when it broke it was a free fall. जब yeah. वो 6 out of the 7 games. Iyer, the batsman had to deliver here. Iyer, the batsman had to deliver a 550 run, 600 run season, considering the batters around him. When that did not happen, the failure was matlab written. Venkatesh Iyer second season syndrome. So ye sare, the Iyer factor, which was going to be KKR's big thing, that let them down. And शायद here and where जो playoff और उसके बीच में जो gap था, वो bridge हो नहीं पाया. But the stars for the campaign, Rinku Singh, my word. ओ भाई, हम लोग बदल चुके हैं, अपना रिलीजन बदल चुके हैं, मैं और विकास. No bigger star than Rinku Singh on this planet. हिंदुइज्म से हम लोग रिंकुइज्म पे आ गए हैं भाई. रिंकुइज्म We से are आए. convert हो गए. Rinkuism, we follow Rinkuism. We're followers and preachers of Rinkuism now. रिंकुइज्म. The pure joy of watching someone Rinku who Singh, has been there in domestic cricket legend, legend, to have legend, that legend. moment. Yeah, That is what we रिंकू want. सिंह. एक्चुअली मैं वही सोच रहा था पॉजिटिव क्या है. रिंकू सिंह डेफिनेटली पॉजिटिव है केकेआर के लिए. विकी ने बोला विकास की कि अय्यर वाज द अयर्स दैट टर्न्ड फॉर देम. आई मीन उनका मतलब वाज दैट इट, या देयर वर अदर थिंग्स फॉर केकेआर जो हुआ उनके साथ एक्चुअली. I think because I think sixth place is ऐसा, I think optics wise is just too high for them considering their season. I think so. Looks like क्योंकि मे बी बड़ी विंस हुई है इनकी, 12 पे बहुत सारी टीम्स हैं, तो मे बी दे आर अप देयर. या They'll end up 7th actually ना. आज जो भी जीतेगा will go मे बी. 6th. या they'll go 6th. या they'll end up 7 बोल दिया सीधा. हाँ, वही होगा ना. हाँ नहीं मतलब हार जाना मतलब पक्का है ऐसा बोल रहा है विकी. तो देखो केकेआर के साथ ना अगेन परफॉर्मेंस की बात विघ्नेश ने कर ली. आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट फ्यू थिंग्स व्हिच इज श्रेयस अय्यर, ब्रैंडन मैकलम, जो उस दिन उन्होंने आई गेस किसको भेजा था, क्या शिवम मावी को भेजा था अगेंस्ट चहल, और झगड़ा कर रहा है श्रेयस अय्यर. मतलब वो क्लैरिटी नहीं है किसी में भी कि ये करना है नहीं करना है, कि शिवम मावी को क्यों भेजा, उसको भेजना चाहिए था नहीं भेजना चाहिए था. देन अगेन यू आर सेइंग कि टीम मैनेजमेंट का हिस्सा है, टीम मैनेजमेंट का भी हाथ है प्लेयर्स टीम सिलेक्शन में आई थिंक. एंड देन योर योर सीईओ कम्स एंड सेज कि बॉस हमारा तो कुछ आई डोंट थिंक ओ भाई देयर इज साहब, एनी. वो क्या है वो. दैट इज सो. But KKR was so unlike KKR this season, right? KKR was very unlike. In the last 3-4 seasons since Brendan McCullum, मतलब वो दिनेश कार्तिक वाला fiasco, then Morgan, then आधा season वैसा, then change करके वेंकी, then that decision to keep वेंकी in for and Shubman. Shubman Gill, exactly. Yeah, Shubman को जाना, मतलब वो that 3-4 seasons, it's just unlike KKR what's been happening. मतलब मैं तो सोचता था अरे KKR, one of those franchises जहाँ पे Venki Mysore, they're the guys you trust in the back office to take great decisions. But I think मैं भी admit करूँगा, I think I fell for them. I think fell for the the 8 big guys जिनके नाम दिखते हैं हमको बड़े बड़े, Cummins, Russell, Shreyas Iyer. मतलब I think we fell for that, and we sort of a lesson for us also कि कीपर नहीं है भाई, ये क्या है, मतलब कीपर नहीं है, ये क्या होता है, मतलब what does it goes down to their decisions before the season, जो उनका सीजन. आई थिंक दिस इज, आई थिंक सीएसके का बोल रहा था विघ्नेश, आई थिंक दिस इज द टीम वेयर, मैं उस समय बोल रहा था कि वेर यू सी कि ये सब ऑक्शन में ही खराब किया ने. नो कीपर, यू हैव नो ओपनर्स, यू हैव आयरन फेस, क्या क्या कितने गॉड नोज हाउ मेनी ओपनिंग कॉम्बिनेशंस दे ट्राइड, देन फेल्ड. नीतीश राणा, मतलब Nitish Rana was a shining light, and Russell was of course the positive for this season. The comeback was Russell, comeback season of Russell actually. ये 2-3 सीजन से जो Russell नहीं कर रहा था, hey, that's a great positive for them. उमेश यादव जो तुक्के में फंस गया उनके पास, turned out to be a very big positive for them.
क्योंकि as an accelerated auction they didn't went for him in like the first place. Yeah. So that again 20 तुक्के में 20 उसको प्लेयर्स चुना खिलाया है. यार केकेआर ने, 20 प्लेयर्स खिलाया केकेआर ने, Yeah, and 20 प्लेयर्स Rana कौन खिलाता है, Russell, और उसके साथ Rana Russell पा- Umesh, I think यही तीन राणा एक रसल thing. उमेश, यस यस, Yeah, और रिको and सिंह। Vicky, पांच पांच ओपनिंग पेयर्स, पांच ओपनिंग पेयर्स किसके होते हैं? पांच yeah भाई ओपनिंग वही पेयर्स तो, कैसे हो God सकते knows. Yeah. हैं? मतलब उनका सीजन सम अप इस फैक्ट से कर सकते हैं कि उनका पहले मैच में ओपनर रहाणे था, लास्ट मैच में ओपनर अभिजीत तोमर था। अभिजीत तोमर भाई साहब. तो या दैट्स ट्रू. मतलब विकी वांट टू कम टू, मेरे को लगा था कि एक बार हम लोग सीजन की पहले बात की थी, आई सेड कि श्रेयस अय्यर मेरे को केएल राहुल में और ज्यादा डिफरेंस नहीं लगता है. बोलते हैं, अरे क्या बात कर रहे हो भाई, बट आपका क्या है अभी? डू यू थिंक हैव द सेम ओपिनियन के डू यू हैव फेथ इन श्रेयस अय्यर? बिकॉज़ व्हाट डू यू थिंक अबाउट द कैप्टनसी ऑफ श्रेयस अय्यर दिस सीजन? कैप्टनसी वाइज मुझे ऐसे ग्लैरिंग एरर्स मतलब नहीं दिखे यार, क्योंकि शायद मतलब द गेम वाज नेवर ऑन द एज विद केकेआर अपार्ट फ्रॉम द लास्ट गेम. इफ दे वन कंफर्टेबली, दे लॉस्ट बैडली. तो कहीं पे भी ऐसा एक कैप्टनसी वाला ये नहीं था. बट अय्यर, द फॉर्म दैट ही केम इन, मतलब यार यही होते हैं ना यार जो बड़े Or प्लेयर. is it the management wala ki, you know, the too much interference of management Possible, into the possible, team? but you look someone like a Gambhir whom we consider a legend, someone like a Rohit who we consider legend, Kohli a legend. ये सब IPL में ही मतलब हम लोग ज्यादा देखे हैं. Kohli for that matter, मतलब they use their peak form to drive the team ahead. ये जो था, that was a very big disappointment for me. Aiyar, what he did here, मैं मतलब I expected great things from him. अबाउट मैनेजमेंट एज वेल, शशांक मतलब मैनेजमेंट, उसको नंबर 3 का स्पॉट मिला था जहां पर वो खेलता है. आई थिंक उसका परफॉर्मेंस देना उसके हाथ में था, जो उसने नहीं Correct. किया. एंड यू आर 26 27 years old, you are I'm not talking about Shreyas supposedly Iyer, the batsman. I'm not saying that. I'm talking about अच्छा. Shreyas Iyer, the captain only, not the batsman. Batsman was decent this season, wasn't good, wasn't bad. But I think the captaincy is where I again thought कि drive नहीं था बहुत ज़्यादा टीम को लीड करने का. मुझे और secondly कुछ decisions भी उसके मेरे को मतलब not able to figure out your team का structure only, कि कोई कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे कोई आ रहा है. फिर वो क्या बंदा था, वो एक फास्ट बॉलर लाए थे मावी, फिर उसको लाए, क्या मावी नाम है, को रसिक 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 सलाम सलाम, को. फिर मावी आया, फिर फिर कुछ हर्षित और राणा हुआ. आया. सो डिड एवरीथिंग टू रिप्लेस मावी विथ मावी, ऐसा हुआ मतलब एंड में. मतलब सो इट्स अ लिटिल, और आई डोंट नो, द थॉट प्रोसेस थोड़ा सा समझ में नहीं आया मेरे को बिल्कुल. नेवर अ बिग फैन ऑफ ब्रेंडन मैकलम. मुझे मतलब यार शायद वी स्पोक अबाउट दिस अर्लियर कि यार जो भी कैप्टन है, कोच है, इफ दे डोंट विन इन द फर्स्ट सीजन, दे सॉर्ट ऑफ ऑलवेज कीप हैंगिंग बैक. वो बाद में कभी जीतने की मतलब वो नहीं रखते हैं. और जब व्हेन ही वाज अपॉइंटेड इंग्लैंड्स कोच, तो तभी मैंने किसी ग्रुप में बोला था कि पहले इंग्लैंड फेल टू बैट वन डे इन अ टेस्ट, अभी शायद एक सेशन भी ना करें. ये जो अल्ट्रा पॉजिटिव अप्रोच है, ये सब मतलब यार बात करने के लिए अच्छा होता है, but it takes a lot of things to materialize into Yeah, execution. it does definitely. It needs an entire ecosystem to support that. तेरे ग्रासरूट से भी वैसे प्लेयर्स आने चाहिए जो आके घुमाए. बट टेस्ट में तो वो चीज चल ही नहीं सकती. बट T20 में आई एम आल्सो अ बिग एडमायरर ऑफ दैट काइंड ऑफ ब्रांड ऑफ प्ले एक्चुअली. Right. बट या मतलब बट फ्यूचर किक है भाई लोगों. मतलब मेरे को सबसे ज्यादा इनका लगता है कि आई थिंक दिस इज द टीम दैट हैज टू वर्क द मोस्ट to get their house in order, I think. Possible. Yeah. Yes, I do agree. Because they had to resort to whoever was dropped. They had to bring all them in to sort of go ahead in the auction, and that is not a good thing. और भाई कीपर being such a rare breed, मतलब सबने ले लिए हैं अपने कीपर्स. मतलब मुश्फिक को कहीं नहीं बचा है अब. हाउ डू यू, हाँ वही है मतलब बॉर्डर से एक साइड से नंबर लाना ही पड़ेगा, लाना ही पड़ेगा साइड से ही. Bradman. भाई मतलब मैं फिर, बट दैट्स अ ओवरसीज ना, देन यू हैव टू हिट दैट ओवरसीज स्पॉट आल्सो, देन की एक ओवरसीज भी तेरा वो हो रहा है. देन ओपनर मतलब तेरे को 2 ओपनर चाहिए, एक भी नहीं चाहिए. यू नीड 2 ओपनर्स. मतलब हाउ विल यू फाइंड 2 ओपनर्स इन 1 सीजन? मतलब एक सीजन के बाद 2 नए ओपनर कहाँ से मिलेंगे? कौन सी दुनिया से आते हैं 2 नए ओपनर? मतलब तो वही है, मेरे को थिंक इनको बहुत कुछ सही करना है. एंड यू नेवर नो, जब तक ये सही करे. आंद्रे रसल बुड्ढा हो गया होगा और कमिंस वो उसका वियर एंड टेयर हो चुका होगा एज अ बॉलर. आई डोंट नो. सो आई थिंक दिस फ्रेंचाइज हैज अ लॉट टू केकेआर इज इन टैटर्स फॉर मी. बट ठीक है, चलो भाई, केकेआर की बात हो गई बहुत कुछ. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. आई थिंक टफ सीजन फॉर देम अहेड. 5th प्लेस दिल्ली कैपिटल्स. This is a tough one to take, but we'll start from Vicky only. Vicky, you were very confident about Delhi. You thought they had built a very good team.
Of course, we know what went wrong in terms of just unfortunate things for Correct. Delhi. Just umpiring decisions also sometimes not going their way. Illness, matlab injury. Mitchell Marsh को injury late आया, Warner late आया into the competition. Nokia started very late into the competition. थोड़ा सा, and then that COVID also hit the team. Shaw का भी scene रहा कि Shaw भी got ill at the wrong time basically in the tournament. तो मतलब yeah, of course that stop start too है, but I'm saying apart from these conditions, what went wrong for Delhi कि आखिरी में वो लोग नहीं कर पाए, they could not cross that barrier, and yeah, hopes for the It future. was Players who looking good. Yeah, Vicky, we can go ahead. it was Delhi's IPL to lose this year, yeah. I was a Oh, very strong advocate. मैंने बोला भी था कि after the auctions, I don't think इससे ज़्यादा explosive top 5 है, इससे ज़्यादा utility cricketers हैं lower yeah, middle order में, bowlers में. They had everything going for them, यार. और जो शायद आपने external factors ये किए might have played a role in their hindrance, but Delhi have themselves to blame. I'm मतलब अगर if you look at the season, if you reflect back, you won't get a moment and say कि यार इस प्लेयर ने मतलब खराब किया इसके कारण हम लोग ये हुए, we expected yeah. a lot more. Everyone performed their part to execution, Except but Lalit. Lalit maybe, but you sort of expect that from an uncapped player. मतलब उनकी भी limitations होती है season after season. It all comes down to that one man again, yeah, that charismatic leader of Delhi, what we saw, what we expected, and what we know Yeah. of, who has staged so many great things in national colors, and you sort of expect that to do him in a franchisee cricket, and that for Delhi was a big pain point this season. Yeah, Fine. yeah, yeah. I agree to that player because दिल्ली Yeah, I'm very क्यों शोर नहीं uh, मचा पाई इस सीजन. दिल्ली शोर मचा नहीं पाई इस बार, तो मेरे मेरे वेरी डिसअपॉइंटिंग इस बार. मतलब अगर मैं दिल्ली कैपिटल्स के नाम के साथ, टीम के साथ अगर कोई एक वर्ड रिलेट कर पाओ, तो इट्स ओनली डिसअपॉइंटिंग. नॉट जस्ट देम, द होल True. कंडीशंस अराउंड देम, बट अगर कंडीशंस को अगर बाहर रखते हैं, व्हाट कुड दे नो डू राइट ऑन द Yeah. फील्ड. दे डिडंट. यस्टरडेज मैच एज वेल, तुम सारे मैचेस देख लो, देयर वर लैक ऑफ अप्रोच. वहां पर काफी अप्रोच का प्रॉब्लम था. जैसे अगर तू लास्ट लास्ट अगर सीजन देखेगा, शॉ वाज नॉट रियली परफॉर्मिंग. दिस टाइम शॉ वाज परफॉर्मिंग, देन लास्ट शॉ ईयर तो गॉट शॉ इंजर्ड. मारा था रे. लास्ट ईयर भी शॉ मारा था. 2020 में शायद बोलते होंगे, हाँ. हाँ, हाँ, 2021 में शॉ मारा है. 2020 में नहीं मारा है, राइट. हाँ. तो यू इफ यू हैव यार, तुमने एक तो बैक, तुम्हारा बेंच स्ट्रेंथ ढंग से यूज नहीं किया है. तुम्हारा खलील अहमद आ रहा है, जा रहा है. यशदुल इज नॉट प्लेइंग. यू प्लेड मैंडी, यू प्लेड सरफराज खान, यू प्लेड My God, शेखर भगत. Mandy. My God, भाई it's तुम लोग फिर 2022, भी, man. Mandy फिर is यश, playing for Delhi, opening for Delhi Capitals, man. एग्जैक्टली, Wow. एंड स्टिल यू आर नॉट प्लेइंग व्हाट यशदुल. ललित यादव से तुमको ऐसी कितनी बॉलिंग मिल रही थी जिसके जिसकी वजह से तुमने यशदुल को बाहर रखा, जिसकी वजह से Yeah, तुमने yeah, बाकी yeah. प्लेयर्स को बाहर रखा. आई अग्री कि मिचेल मार्श नहीं आया, आई अग्री कि बाद नौकिए नहीं आया, लेकिन देन अगेन यू डिडंट लुक. आई थिंक मुस्तफिजुर के पास भी यू डिडंट गो बैक आफ्टर But चार कुछ. फॉरनर्स नहीं खिला सकते थे ना. You have Mitch Marsh, Warner, you have Roman Powell, and you have Andrek Nokia. So किसको खिलाए, किसको किसकी जगह हटा. वो तो मेरे ख्याल से that wasn't a forced था, वो forced change था. Wasn't फोर्स चेंज, this thing. बट मेरे को लगता है कुछ चीजें यार उन्होंने बहुत, मतलब मैचेस में स्लॉपी फील्डिंग, काफी वीक, काफी Yeah, yeah, इंजर्ड टीम yeah. लगी मेरे को. पूरी टीम इंजर्ड लग रही है. मुझे कोई भी मुझे ऐसा, हाँ. हाँ. हाँ, तो मुझे कोई इनफैक्ट ऐसा ऐसा मेरे को लग नहीं रहा था कि कोई भाई ये है कि फिट टू है. in continuation to what Vikas is saying, मुझे ऐसा लगा कि most of the times they thought कि यार the game is for granted, the kind of star power that we have, we will sort Yeah. of make a match of it. वो sometimes it वाले did look like that. they Yeah. did not appear as hungry compared to the other 4 teams that have made it to the playoff, and rightly so. And Delhi needs to sort of reflect on that. Yeah, yeah, for sure. ऑल्सो So द yeah, ऋषभ पंत, यार ऋषभ पंत बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है इस बार, बहुत yeah, बड़ा yeah. डिसअपॉइंटमेंट. Wiggy maybe also said that also. Yeah, that captaincy. तो yeah, मतलब मैं, I mean, it's my team. मतलब तो मेरे को, of course, there's huge disappointment. मतलब यार चल ठीक है, तेरे पास availability नहीं है, whatever. But your approach matters the most. यार GT is on top of the table because of exactly what opposite they did to what DC did. That attitude, yeah, that just will to win, that just taking maximum efficiency अपनी use करना, giving everything on the pitch, आखिरी तक मैच को ले जाना, जीतना, मतलब दिमाग से खेलना.
समटाइम्स तो यार वो एक जो मैच था लखनऊ सुपर जायंट्स के अगेंस्ट दिल्ली हारी थी जिसमें ऋषभ पंत ने कृष्णप्पा गौतम को एक मेडन ओवर खेला था. I think that is Delhi's capital summed up in a I think in this tournament. I think that over sums it up. I think that match sums it up. Running the between the wickets, easy twos here, easy twos in 2022 by T20 cricket में easy twos वो लोग एक लेते हैं यार. And this is every game. So fitness and fielding ये जो basics of the game until you get this right तो तुम compete कर ही नहीं सकते where percentages में game decide होते हैं. You know Delhi lost it in percentages this season. The games also and the qualification also they lost it in percentages. they मतलब तुम वो एक्स्ट्रा 5% 10% भी नहीं एक्स्ट्रा 5% ही जरूरी था दिल्ली के लिए. And that comes from the captain. I think the captain is I think a lazy fellow. Just by nature, it's not his fault and everything. He is like that. Yeah, I think maybe he changes. Hopefully, I think thoda sa wo hai for sure. But Rishabh Pant ka chokeability is the word actually. You know that's shown again. I think last year also during the pressure game, जब pressure को ऊपर फटने के लिए होता है, तो उसका lid संभाल नहीं पाता है वो अपना lid. मतलब you've seen that. Otherwise मैं बहुत ज्यादा बैक कर रहा था ऋषभ पंत को कैप्टनसी के लिए बिकॉज ही ट्रस्ट हिज प्लेयर्स. मतलब वो चीज मेरे को अच्छी लगती है प्लेयर्स की कि कैप्टन्स की कि वो अपने प्लेयर्स को ट्रस्ट करता है. वो एक बहुत अच्छा वो था. बट दिस ईयर विद दैट ही नीड्स टू इंडियन कैप्टन नीड्स टू बी अ स्टेट्समैन आल्सो. तो वो जो फील्ड को वापस ले जाना वापस बुलाना प्लेयर्स को जो नो बॉल वाला इंसिडेंट वाला थिंग एंड जस्ट दिस इंसिडेंट वेयर कैच छोड़ना कल वाला. Can't do that, man. You can't do that being the captain, man. You can't do that. I thought वो जो लास्ट में प्रबाडा को नहीं दिया उसको दिया ओवर क्या टॉम करन को लास्ट ईयर. I think it was a learning phase and whatever, but now it looks like he can't handle pressure. And अगर एक आध साल और दिल्ली कैपिटल्स I think should try with Rishabh Pant as a captain. अगर if he can't handle pressure, then yeah, that is the main thing as a captain. Yeah, I mean, MS Dhoni has built an entire career of being able to handle pressure. So it's definitely this thing. Uski chokeability, uska form in T20 is now a concern for us in the Indian setup as well. Indian team के लिए 4 नंबर बहुत important position है. अगर सूर्या और उसके बीच में decide करना पड़े तो सूर्या any day यार. And impact knocks के लिए सैमसन भी अच्छा खेल रहा है. कीपर की तो कोई कमी नहीं है इंडियंस के पास. कीपर ही कीपर है. So I think that's also a thing. अक्षर पटेल I think कोटला में अच्छा करेगा, so I'll give him a pass. I think that is the only thing with अक्षर because 9 करोड़ का तो प्लेयर बिल्कुल नहीं लगा इस सीजन. वो जो 9 करोड़ में रिटेन किया गया था उसको look like a 3-4 crore player. So yeah, I think these are the things here with Delhi Capitals. I think it's about percentages. The team is still very good. Few questions on Ricky Ponting also. Why is he not why does he not get his team ready for the important stages? It's just that that's still a factor with Delhi Capitals. Still that small team which does not have that mentality to win in the bigger occasions. If I were Ponting, I would this season mera last I would make a move. I would come to Punjab, make a change, but I would definitely leave Delhi. That is a great career call for Punjab because then he has nothing to lose with Punjab क्योंकि उससे नीचे तो कहाँ ही जाएंगे. Plus he has that Livingston and this Australian factor going on over there. So yeah, that's a good thing. That's a good option for him. Let's see हम किसको लाएंगे फिर. तुम लेके आओ कुंबले को. DK the coach. DK the coach. डीके तो अभी खेलेगा भाई हमारे साथ. चालू करते हैं हम लोग. डीके की बात करेंगे. We'll talk about DK in the next podcast when we are done with the IPL finals. But yes, we have covered all the teams. It was great. It is 1 hour 24 minutes almost हम लोग बात कर रहे हैं talking about the IPL. But it was much needed, right, Vicky? I don't know. मतलब I think हम लोग तो फिर भी बात कर लेते हैं. फैंस से बहुत बात करते हैं. विकास और मैं खुद बात करते हैं. हम लोग यहाँ पे we live in an environment कि हम लोग स्पोर्ट्स की सुबह से शाम बात होती है. But Vicky, I don't know, थोड़ा सा साइलोस में रह रहा होगा, doesn't work in sports, तो Vicky का थोड़ा सा निकालने का मन तो कर रहा होगा Vicky. The CSK love did come out, and I'm not sure how much hate I'm going to. That is fine. I know your CSK और X के लिए प्यार आ ही जाता है वापस ना थोड़ा. It happens. I understand. Right. So, do we have any comments, Rishikesh? Can we take comments now? Because we'll take some comments, Vicky. As soon as we are done with the comments and the questions that we have, we will close this, guys. Whoever is watching, thank you for staying, live and watching with us. And now we'll be taking your comments. Rohan Pandey, bhai, kaise ho Rohan bhai? Good evening. Welcome to the Sports Republic.
Rohan Pandey is pushing question for MI. Their team looks balanced now, but they still need one good quality spinner. What do you think would be the strategy regarding this? I'll go to Viggy Bhai for this, since Viggy Bhai, Rohan Pandey Bhai is a regular watcher. He's asking what spinner specifically does MI need? If they have an overseas slot, which it looks difficult right now, immediately my mind goes to Adam Zampa, quality spinner who could be drafted in. But for that they have to No clubs. make एक overseas slot का. Indian spinners Yeah. तो यार सारे खर्च हो ही गए हैं. Most of the teams have A-list spinners in their ranks. If Yeah. someone else comes up from the under 19 या फिर uncapped इसमें, Hmm. I'm not so sure. But Zampa is someone they can certainly look into. Yeah, Amazing. Zampa, maybe Tabriz Shamsi also is somebody they can go to agar wo, they want that left arm, angle thing. But yeah, I Adil think these are the आदिल रशीद भी है, बट या अगेन वही है, बट वही है कि इंडियन स्पिनर्स बड़े मुश्किल होते हैं. बट ये यार इंडियन आजकल जो इंडिया की क्वालिटी आ रही है ना प्लेयर्स की, यू नेवर नो, 2 दिन में आपका एक और कोई खड़ा होके आ जाए, हाँ मैं भी इंडिया खेलूंगा, हाँ 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 ऐसा कुछ भी हो सकता है. सो या दैट्स इट. नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट कमेंट रोहन भाई का ये है, CSK has their top 3 set, Gaikwad, Conway, Moin. They need good number 4 and 5 and one Indian all-rounder, which I guess Hunger Gaker can do. What happened to Hunger Gaker? He'll go the बाबा परिचित way. 6-7 सीजन CSK में पानी बांटेगा बेचारा. साई किशोर, जगदीशन को मिल गए इस बार. स्टार स्पोर्ट्स तमिल में कमेंट्री करेगा इसके बाद. अरे यार बाप रे, विगी and his love for CSK never ceases to amaze me. बोल भाई विकास. मतलब नहीं, they लेकिन could fit in देखो ना, प्रशांत सोलंकी, they could fit in सिमरजीत सिंह, उनको मतलब But they दिखा नहीं couldn't fit in. लेकर कहीं खेल सके. नहीं, लेकिन रोहन भाई ये जो टॉप 3 के बाद में 4, 5, 6, 7 मतलब काफी तकलीफें CSK को है उस हिसाब से देखा And जाए. depends on But- Jadeja if he stays with CSK or not, that depends. I अरे think जय. he's going to stay with CSK, man. I don't think there's that विकी मान ही नहीं रहा है. विकी को कॉन्स्पिरेसी चाहिए उधर. CSK Surya wants he Surya, wants CSK done and dusted with. Tim Davis, रविंद्र जडेजा, ये MI का 4-5. अरे बाप रे, क्यों? वो 2010 में मुंबई जाना चाह मैं तो रहा बोल था. रहा हूँ स्वैप करो, वापस लो शर्दुल को दिल्ली से और हमको दो तुम जडेजा. कैसी रही? हमको भी लोड ऑर्डर चाहिए. ललित यादव पे तो बहुत बड़ा वो है इम्प्रूवमेंट. रोहन भाई का जो पहला क्वेश्चन था स्पिनर, एक A1 स्पिनर आपको मिल गया, फिनिशर आपको मिल गया, इंडियन फिनिशर. मुंबई Next, bhai, can we go to the next comment? Shushud bhai, कैसे हो Shushud bhai? Good evening. Even a reference in a conversation about PR team is just sad. Should not be encouraging such things for national selection. So I think it is something related to Viggy bhai ka comment. Viggy bhai was, I think, obviously kidding with that one, Shushud bhai. But I think हाँ थोड़ा नहीं. Were you kidding with the PR thing? यार matter करता है. You really think matter करता है? I was coming from a space ki the kind of lobbying that we do for other players, for them to, jab Surya was not getting selected, the kind of noise that was made on social media, I'm not so sure ki Rahul Tripathi ke liye utna karenge ki nahi. लेकिन इनको नॉइज से कुछ फर्क पड़ता भी नहीं है वैसे, पता नहीं क्यों. या नहीं भाई, आई डू थिंक पीआर किस लेवल, एक लेवल तक प्लेयर का इंपॉर्टेंस जरूर मतलब रहता है एक लेवल पे, बट इट कैन नॉट बी जस्ट पीआर. आई मीन परफॉर्मेंसेस भी साथ में इंपॉर्टेंट रहते हैं. इफ यू डोंट हैव परफॉर्मेंसेस देन पीआर वीआर तो ठीक है, इट्स जस्ट अ सुपरफिशियल थिंग. पीआर ये सब पीआर विदाउट परफॉर्मेंसेस कैन वर्क अगर यू आर ऑलरेडी अ लेजेंड लाइक धोनी, यू नो. तो अदरवाइज इट डजंट मैटर कि पीआर है नहीं है, आपके पास परफॉर्मेंसेस आर द ओनली थिंग. आगे भाई. Again, Kurohan with the questions. A great squad, I would say, although Rahul Tripathi is missing. I think he's talking about Indian team. the India squad to South Africa. He has done everything good to be a part of the squad. Rishabh Pant as vice captain. I not even picking him in the playing 11, Rohan Bhai is saying. So Rohan Bhai being ruthless against Rishabh Bhai. मैंने कल भी बोला था यार, when the live stream ended, yeah, however angry I am with whatever the performance of Delhi Capitals, I have too much belief in and love for Rishabh Pant to, you know, turn on him. बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए. I think I believe in him a lot. I have believed in him through his rough patch.
जब वो 19 में सब गाली दे रहे थे उसको सेमीफाइनल के बाद. He's gone on and won games for India. I think Rishabh Pant is one of those guys like Virat Kohli जो अपनी लाइफ के साथ बहुत जल्दी इंट्रोस्पेक्ट करता है अपने क्रिकेट को, अपनी लाइफ को, एंड ही मेक्स चेंजेस. आई थिंक दैट quality is very important for a professional athlete, and I think Rishabh Pant has that in abundance, and I think he'll be back. I think, but ऋषभ पंत yeah, what? ऋष- But yeah, other part of the question, Rahul Tripathi भाई, हाँ बोल, कुछ बोल रहा था मैं विकास. बोल रहा हूँ, ऋषभ पंत ये टीम में तो खैर इतने सारे प्लेयर्स नहीं थे, तो ऋषभ पंत टीम में होना तो था ही, एंड हु इज द अदर, कोई कैंडिडेट था ही नहीं वहां पे वाइस कैप्टन जैसा. सो आई एम जस्ट हैप्पी दैट मतलब वो कहीं ना कहीं देख रहे कैप्टनसी सिनारियो में भी. बट आई वाज एक्सपेक्टिंग हार्दिक पांड्या को शायद कैप्टन या वाइस कैप्टन बना दे, या बट वो भी नहीं हुआ. हम लोग को तो न्यूज जो आ रही थी हार्दिक या धवन की बोल रहे थे कि मे बी वो दोनों को है, So बट या PTI is not right these days. yeah, not always right. मैं उस समय बोला था PPI are these days are this quite नहीं, often but wrong there. हार्दिक के लिए वो चेक भी जरूरी है ना कि जस्ट बिकॉज ऑफ you're captaining an IPL franchisee, you are not part of the team directly, आप आके कैप्टन कर दो, it might not have center right. Yeah, true. I True. agree. Agree. That is definitely a point why they can't. मतलब he अगर वो कैप्टन बनता तो KL Rahul wouldn't have been in the team. तभी Correct. chance था. मतलब being with KL Rahul in the team, there was no chance. कि मतलब वो yeah, that was the assumption that KL Rahul is one of the seniors who are being rested, but clearly not. He is. So First he can have yeah, the I coffee, think. then he can have the coffee. या बट यार हम लोग बात कर रहे थे रोहन भाई, हम लोग इसकी बात कर रहे थे टॉकिंग अबाउट द टीम. हम लोग बोल रहे थे कि मतलब अभी त्रिपाठी तो छोड़ो, अभी शुभमन भी नहीं है, सैमसन भी नहीं है, तो अभी ये सब तो ऋषभ पंत है, तो आई थिंक कि तो पुराना ही पैटर्न है. तो ऋषभ पंत तो बहुत लेट आता है, वो जो ड्रॉपेबल्स की लिस्ट है उसमें काफी लेट आता है आई थिंक. तो अगर बाकी सब लोग हैं तो ऋषभ पंत तो अभी काफी टाइम है वो कॉन्वर्सेशन में आई थिंक. या नेक्स्ट वन, Thala Sun is here. KL and Pant are been in consideration for captain. Your take? Pant, yeah, KL. I've never been a captain of KL's captaincy. I haven't been a fan. I think Punjab Kings के भी हमने देखा था कि looks dazed and confused and out of place. It's like Rahul Gandhi. मतलब it's just the equivalence is the same. I don't even मेरे को बुरा भी नहीं लग रहा है बोलने में. Actually, it's not even sounding controversial. I think it's a public fact Ideal. for public consumption. I think yeah, ideal match है I think. तो I'm sorry KL Rahul fans. I mean मेरे को पता है KL पोपा टाइप भाई अब बंदे हमारे You're देखते being हैं. sorry to KL Rahul fans. Oh my goodness. Yeah, but I mean he's you are being sorry to Rahul Gandhi's fan. नहीं भाई, राहुल गांधी के फैंस के लिए तो आई एम नॉट सॉरी फॉर, बट क्योंकि देयर इज समथिंग रियली रॉन्ग फॉर यू फॉर सपोर्टिंग राहुल गांधी स्टिल. आई एम सॉरी आई डोंट वांट टू व्हाटएवर, बट दिस इज टू मच. बट ठीक है चलेगा. बट या सो दैट इज द थिंग, दैट्स माय टेक. बट पंत मेरे को देयर आर सम क्वालिटीज, कैप्टन क्वालिटीज इन पंत, बट देयर आर सम क्वालिटीज दैट आर लैगिंग इन हिम. सो या कंसीडरेशन के लिए फॉर श्योर, बट एक दो साल और दिल्ली कैपिटल्स के लिए देखना पड़ेगा. नॉट येट, आई थिंक नॉट येट. Yeah, KL and Pant are anyway second and third contentions of the captain, right? अभी के लिए टीम में तो आई थिंक कोई और बनता भी नहीं था. श्रेयस अय्यर ने तो कुछ ज्यादा ये नहीं किया है वैसे भी. उस हिसाब से आई थिंक KL and Pant के बारे में बहुत ज्यादा, स्पेशली ये साउथ अफ्रीका सीरीज में तो कुछ बहुत ज्यादा बातें करने जैसी नहीं है. So should be okay. Anything Vicky, or we'll move to the next comment? नहीं सही है. Yeah. जैसे बता पैकिंग ऑर्डर के हिसाब से इट शुड नॉट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस. वी ऑल नो कि रोहित के बाद कौन कैप्टन बनने वाला है. सो कौन, श्रेयस? हार्दिक भाई I am on board. We are on board. On board. स्पेशली फॉर व्हाइट बॉल में तो यार आई डोंट या ऑन बोर्ड. अगर बॉलिंग कर रहा है बंदा तो ऑन बोर्ड है भाई. नहीं तो मेरे को उसके लिए भाई कैप्टन होने के लिए टीम में भी होना चाहिए. Only based on his batting, Hardik is not in my team. अगर bowling भी देता है तो Hardik is in my team. So then he is the captain, I think, for sure. And Sanju has thrown nice as well. तो interesting times. संजू अरे टीम में ले नहीं रहे यार इसको. संजू अभी का भी weird है यार. संजू sometimes I like Sanju, then you like कि अरे नहीं यार ये कैप्टनसी करेगा इंडियन टीम की है. मतलब he's just another Rohit Sharma in the wings. Yeah. I think. Yeah, next one, bro. How many more do we have? Do we have many? ये last है. Will Pollard be released? Rinish bhai is asking. And guys, अगर किसी का comment नहीं लिखा है तो हम लोग 1.5 घंटे स्ट्रीम कर रहे हैं आई थिंक. एंड हम लोग को प्रीमियर लीग की भी 8:30 की स्ट्रीम लाइव करनी है. That's the
last day of the Premier League. So जो भी आप लोग देख रहे हो अभी तक, do join us for that. It's going to be a very interesting day. The title is going to be decided. Champions League, Europa League places, and relegation also, all to play for in the last day. So everybody is watching. Please join us at 8:30 for that watch along. 8:25, yeah, 8:30, 8:25, है ना? 20, 8:20, yeah, 8:20. Yeah. So will Pollard be released? We'll put this as the last question. I think no, because I think there's too much of what he's done for Mumbai Indians, and एक साल का leave है तो मिलेगा उसको. I think no for that reason. I think Vicky and Vikas can comment on their opinions on this, and then we can close this podcast. I don't think. कभी I Vicky, don't think he yeah, will be anybody, released. guys. Yeah. No, you don't I think? don't. Yeah. I don't think he will be released. First of all, the reason you have said कि इतना कुछ किया है already मुंबई इंडियंस के लिए. Last year तक भाई वो चेन्नई वाला मैच जो almost मर चुके थे मुंबई इंडियंस, वो मैच जिताया था. And secondly, 6 crore है, 6 करोड़ मैच. हाँ, 6 करोड़ में रिटेंशन है. Yeah. रख लो, क्या Vicky, छोड़ के क्या मिलेगा? अगर छोड़ के उसको Vicky, ऑक्शन में डालेंगे वो 6 करोड़ से ज्यादा में जाएगा, पता है? ज्यादा जाएगा विकी. और हाँ, और मेरे को पता है कौन खरीद के परफॉर्म भी करेगा. जीटी खरीदेगी उसको, और देख तू उसके बाद क्या करता है वो. वाइट आशु भाई जो करेंगे ना उसके, मेरे को लग रहा है अगले साल गेल ने बोला है ना मैं आने वाला हूँ. आशु भाई फोन कर चुके होंगे. Hey man, विल you are प्रैक्टिस with us. रात को 9 बजे, सुबह 9 बजे प्रैक्टिस, रात को 9 बजे. आई थिंक That मेंटर बन के आने वाला है उस टीम में रवि शास्त्री. Your day captain. वो बोलता है your day. वो बोलेगा your day captain will be हार्दिक, your night captain will be आशीष नेहरा. आशीष नेहरा. कपिल Paulie is the देव, assistant. संदीप पाटिल वाला. Yeah. ये कभी कभी वो हो जाता है ना विल की जगह. मतलब आप विल का तो आपको जवाब पता ही है. शुड वुड बी एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. शुड पोलार्ड बी रिलीज्ड? What do you बट think? जैसे आप लोग ने कहा, फेयर इनफ यार. 6 करोड़ से मतलब पोलार्ड को आप दे ही सकते हो. व्हेन I don't think he should be released. यार एक साल तो और, you can give him 5-6 more failures basically. So I think that is where it'll end. And Tim David, Brevis, they have the arsenal to fill that position also. So it's not going to be a problem also dropping him for Mumbai Indians. I think they have the gunpowder for it. और अगर ईशान और रोहित नहीं कर रहे, you cannot have another non-performing player in the middle. और So कुछ that सॉल्व makes नहीं it कर रहे हो easier तुम. for निकाल him. के उसको Yeah. निकाल के कुछ सॉल्व नहीं कर रहे हो. Yeah. Right, guys. Thank you for watching. Everybody who's been there. एक और है क्या? Yeah, we'll take this comment also. Rohan bhai, फिर से you talked about Baba Apuriji. Just to be honest, do you really think he's a T20 material? Hunger will definitely play soon. MS has already praised him. So I think this is Baba Apuriji का comment Vicky की तरफ से आया था. Vicky, do you want to answer that? Yeah. A player who has represented, if Unmuk Chand, जिसके साथ उसने पार्टनरशिप की थी अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में, उन्मुख चंद got to play so many games, and whatever his worth was, he was good enough, he was not good enough, he at least got game to prove himself. अगर आप बिना खेले किसी को बोल दो कि यार he's not good enough after being selected in a particular franchise, that doesn't sit well with me. Praise तो यार अर्जुन टेंडुलकर. हाँ. Yeah. I'm not so sure about Hungrekar. मतलब धोनी का we have seen patterns यार. We have seen Abhishek Nair, we have seen Irfan Pathan, we have seen Manoj Tiwari. फिर धोनी के पीछे गया ये. We have seen many examples when जब fit नहीं बैठते तो fit नहीं बैठते. So I'm just hoping कि Rohan fits in their scheme of things and gets a chance to play. Right. All right, guys. All right. Thank you for watching, everybody. It was a fun chat by Vicky. मजा आया. बहुत दिनों बाद बैठे हम लोग बात करने के लिए. Absolutely. Yeah, always fun, guys. Thank you for coming on, Vicky. Always fun to have you on the Sports Republic chatting about cricket. We will be back soon. Hopefully, you will be back after the playoffs. Sorry. Yeah, after the playoffs, we'll discuss your favorite RCB, then LSG, the two new ones, LSG and GT, and of course, the team that I'm supporting that is remaining in the tournament, which is RR now. RR is now my team in this tournament. So let's see. We'll talk about these 4 teams. Great IPL season has been for all these 4 teams. Lots of things for them to discuss also. बहुत सारी चीजें यार, बहुत सारा मसाला, in these 4 teams also. See, imagine जो खराब टीम थी उसमें इतना सब था. So yeah, the good teams, there's going to be so much to talk about. So much great new talent. The likes of Prasid, Vanendu. This new batsmen, new bowlers, lots to talk about here. Thank you guys for joining us, Vicky and Vikas. Thank you guys for watching. Who has been patient enough to listen to this podcast, and who is going to watch this later
Yeah, kudos to you. It's 1 hour 40 minutes. So अगर आप देख रहे हो, so you must really love us, and thank you so much for loving us so much. But yeah, please guys subscribe to the Sports Republic. Video को like करो अगर पसंद आता है तो, if you like the content, and do subscribe to the channel as I said before. Share करो दोस्तों के साथ, family के साथ. Not always a friendly, family friendly content, but yeah, most Indians above the age of 18 can watch it. So thank you for joining, guys. It was lovely chatting again, and we'll see you soon. Very soon. Bye bye. Cheers, guys.